Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. Setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream, so why are you always sleeping? I remember when you said you're afraid of what's ahead. What happened to ride or die? I asked and you just start crying. How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause I'm not enough.
down. Get on my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. Ladies and gentlemen, I welcome you all to ROG Showdown Series Apex Legends PC. मेरा नाम है फ्रेंड्स, मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं पाई व्हाट्स अप मैन, कैसे आप फील कर रहे हैं आप आज के मैचेस के लिए? Hey there, it's gonna be my first Apex match, so obviously I'm a bit nervous, but देखते हैं किस हिसाब से आज का ये टूर्नामेंट जाएगा. Hopefully ROG Showdown Series का जो सेमीफाइनल का आज ये राउंड है मजेदार जरूर से रहेगा और कास्टिंग करने में आपके साथ भी हमें बहुत मजा आने वाला है. लेट्स सी भाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है. एंड ग्रैंड फाइनल मैचेस है गाइस, भूलना नहीं है. ग्रैंड फाइनल हमारे ये मैचेस चलने वाले हैं. 2 दिन का पूरा टूर्नामेंट है, 5 मैचेस ईच डे एंड ओवरऑल 10 मैचेस के बाद जो टॉप पे रहेगा वो अपने लिए एक प्राइस पूल का एक अंक लेकर जाएगा, एक छोटा सा पार्ट लेकर जाएगा. तो सारे मैचेस देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बने रहना पड़ेगा. बट भाई अभी आई रिसेंटली वॉच्ड ALS एज वेल. काफी इंटरेस्टिंग मैचेस थे, काफी बेहतरीन मैचेस थे. फाइनल फ्यू जोन्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग. बट द थिंग दैट आई लाइक, दे स्टक टू द डिफॉल्ट, दे स्टक टू द बेसिक. ज्यादा जो नए लेजेंड्स रिलीज हुए उनके ऊपर उतना वर्क किया नहीं था शायद टीम्स ने, और मे बी दे वर नॉट अलाउड टू प्ले. बट बहुत ही कम हमें देखने को मिला. एडवांटेज प्लेस तो वर ऑलमोस्ट नियर टू नथिंग. बेसिक्स इस चीज की बात करो, वेलकैरी, you have a Gibraltar, you have a even Seer was something I saw a lot in ALS. So what do you expect? Will we see the same legends today being played again? It's obviously gonna be a mystery, but hopefully we see Vantage as well, because we know the agent is really crazy, और उसकी abilities and obviously her ultimate is obviously very useful in long range fights, and that echolocation ability provides कहीं ना कहीं bail out करने का एक अच्छा खासा situation जो है provide कर देता है. तो escape करने के लिए भी बहुत एक अच्छा agent बन जाता है. But उसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने price pool की तरफ, जो कि एक grand 75,000 rupees का price pool रहने वाला है. First position को मिलेगा 50,000 रुपीस और सेकंड पोजीशन लेके जाएगा अपने खाते में 25,000 रुपीस. इसी के साथ पहला मैच हमारा होने वाला है वर्ल्ड्स एज की तरफ. आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, किस हिसाब का हमें मैच देखने को मिलेगा? इज इट गोना बी एग्रेसिव और इज इट गोना बी समवेयर a bit safe? सी कुछ टीम्स अभी जब कुछ ही देर में टीम्स रिवील होगी पाए तो हमें पता चलेगा कौन सी खेल रही है. एंड लेट मी टेल यू, वी विल सी सम टीम जो कि पिछले कुछ इवेंट्स में खेली है. ROG शोडाउन सीरीज के ही पिछले कुछ एपेक्स टूर्नामेंट्स के अंदर उन्होंने खेला है. तो I for sure will expect some aggression coming in, and I'd love to see early drop fights as well, because कहीं ना कहीं मोमेंटम सेट कर सकती है टीम्स अपने लिए. अर्ली ड्रॉप फाइट्स आप जीतिए, अर्ली क्लैशेस आप अपने लिए जीतिए विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ डैमेज, विदाउट टेकिंग एनी नॉक्स और फिनिशेस ऑन योर फेवर. अगेन यू विल always have the respawning ability, but why waste time when you can get those strikes easy and get yourself a good loot as well. So I think high tier loot zones के अंदर अर्ली फाइट्स होने का काफी ज्यादा चांसेस है. एंड जो टीम्स अर्ली अपने लिए किल्स स्टैक अप करेंगी, पिछले एडिशन में भी हमने देखा है पाए, उनके लिए लास्ट डे पे जाके लास्ट के कुछ गेम जो होते हैं वो थोड़े से एडवांटेजेस हो जाते हैं.
डे नंबर 1 के ऊपर जो टॉप 3 टीम्स रहती है वो कहीं ना कहीं प्रेशर कम फील करती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स ऑन डे नंबर 2 एंड इस तरीके से हमारे पॉइंट्स जो है वो टोटल बटने वाले हैं. फर्स्ट आई ये चैंपियंस बने विल गेट 12 पॉइंट्स. इफ यू आर ऑन द सेकंड पोजीशन यू विल गेट 7 एंड उसके यू विल गेट 9 एंड देन डिक्रीजिंग ऑन 7 5 4. दिस इज हाउ द पॉइंट सिस्टम इज गोना वर्क. बट मेजर फोकस यहाँ पर रहने वाला है by on the number of frags you can get. Every frag will yield you a point. Yeah, frags are gonna really count, and as far as taking early fights goes, it's gonna be somewhat difficult as well because we know Apex is unlike other games. इसमें आप knockdown कर भी लेते हो तो even after that it's difficult for you to wipe the whole squad क्योंकि revivals बहुत जल्दी हो सकते हैं. आपने respawns भी करने का एक अच्छा खासा वो जो है option available रहता है. तो the game is very क्या कहते हैं fast paced, developments बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी चीजें हमें witness करने को मिलती हैं. और इसी के साथ मैप की तरफ गौर करते हैं हम तो World's Edge का हमारे को पहला मैच देखने को मिलेगा. इनफैक्ट दिस इज गोना बी द मैच थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स ग्रैंड फाइनल. पांचों के पांचों मैचेस रहने वाले हैं हमारे वर्ल्ड्स एज में ही जो कि अभी के रैंक्ड साइकिल में टॉप पे चल रहा है. That's true. That's true. So, it's a very default, it's a very basic map. I don't think so किसी भी टीम को as such नया लगेगा कुछ भी इसके अंदर. There haven't been any changes recently as well. But then again, I'll come back to the topic by Legends. Legends आपको क्या लगता है? What I think is Gibraltar is a must. It is a must for each and every team to have. Again, you can work around. You can try to have some different legends in your composition. आप try कर सकते हैं different चीजें. But what I feel Gibraltar जो आपको rotational capability देता है, जो आपको defensive capability plus अपने Doom Shield के साथ देता है, no other legend can really provide that particular cover for you. Yeah. Gibraltar becomes a very heavy tank kind of an agent, useful to hold positions and all, but कहीं ना कहीं उसके slow speed problem बन जाती है at times when he wants to bail out of situations. वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं struggle होता है. Dome के अंदर एक आध grenade आ गया, एक arc star आ गया, it becomes difficult for him to survive there. But being that the case, Gibraltar is a very useful agent and सारे के सारे agents ये हमें आज देखने को मिलेंगे. Let's see कौन सी teams किस हिसाब से खेलती हुई हमें देखने को मिलेगी. But इसी के साथ qualified teams की तरफ एक बार जल्दी से गौर कर लेते हैं. Dream Esports has Chuck Esports, Relentless, Tarun Gill, Party Momo, Hevan Gaming, We Go Gym, Faded Wizard, and Groovy Gorillas as well. They're being followed by Preds, Bamboozle, Griffers, Ringmasters, Unga Bunga, interesting name है. I hope so उतना ही अच्छी तरीके से खेले और अपने opponents को confuse कर पाए. DD7, Team Bloodbath, Vector Sports, and Phantom Troop. Now again, आपने बात रखी थी आप कैसा एक्सपेक्ट करते हैं टीम्स को खेलने के लिए. So I let you know, Dream Esports, you've seen them very frequently in these tournaments. हमने देखा टीम फेडेड विजर्स को, टीम प्रेड्स एज वेल. जब आपको प्लेयर्स दिखेंगे इनकी तरफ से खेलते हुए, देन यू विल रियलाइज व्हिच टीम दिस इज. टीम बैम्बूजल, DT7, ये कुछ ऐसी टीमें हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पास्ट में भी एंड इवन इन द क्वालिफायर्स टू क्वालिफाई फॉर द ग्रैंड फाइनल्स. सो दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द टीम्स जिनके ऊपर नजर थोड़ी ज्यादा रहने वाली है. बाकी अंडरडॉग टीम्स आई जरूर है. मैं उनसे बस ये देखना चाहूंगा कि प्रेशर में कहीं सकम ना कर जाए. प्रेशर में आकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपना यूजुअल गेम स्टाइल जो है वो बदल दे. दे लाइक टू प्ले अग्रेसिव, दे बिकम सुपर डिफेंसिव कि यार ये टीम्स तो हम देख चुके हैं, इन टीम्स को हमने ऑनलाइन देखा है खेलते हुए, दे आर सुपर गुड, वी विल नॉट बी एबल टू टेक दोस फाइट्स. वो मेंटालिटी नहीं आनी चाहिए बाकी टीम्स के अंदर. एंड आई रियली होप कि हमें एक नया विनर निकल के आए जो कि इन टीम्स के नाम पे बाहर हो, बिकॉज दैट वुड बी अ वेरी बिग आस्क फ्रॉम दीज टीम्स. कुछ टीम्स का फर्स्ट टूर्नामेंट रह सकता है, बट इफ दे आर एबल टू पुट सम गुड परफॉर्मेंस, अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आई से इट इज गोइंग टू बी अ रियली गुड टूर्नामेंट फॉर देम. जी हाँ, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तो सारे की सारी अंडरडॉग टीम्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. और जहाँ तक नर्वस रहने की बात है और जहाँ तक कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करने की बात है अंडर प्रेशर, ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट. यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम्स करेंगी भी ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियां जो कि इन्हें लेटर रियलाइज होंगी कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम से हमें ओवरऑल बेस्ट ऑफ 5 में पड़ने वाली है. बट इसी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा कॉशियस भी रहेंगे, थोड़ा केयरफुली भी खेलेंगे. तो दोनों के दोनों पहलू जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं इस मैच में. इसी के साथ वी विश ऑल द टीम्स द वेरी बेस्ट एंड वील बी मूविंग forward to the match in a while. But सारी की सारी टीम्स हमें सारा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर साथ दिखाती हुई मिलेगी. 100% Dream Esports they would like to redeem themselves. काफी बार देखा इस टीम को डे नंबर 1 अच्छा फिनिश करते हैं. डे नंबर 1 के अंदर टॉप 10 I'd say टॉप 5 के अंदर भी काफी टूर्नामेंट्स के अंदर देखा है. बट द लास्ट फ्यू गेम्स इज समथिंग वेयर दे क्रम्बल अ बिट, थोड़ा सा क्रम्बल कर जाते हैं आखिरी कुछ गेम्स के अंदर एंड दे फॉल समटाइम्स थर्ड समटाइम्स सेकंड. वो अभी तक वो चोटी पे नहीं पहुंच पाए. एंड अ वेरी
गुड टीम डिप्रेशन. आई एम नॉट श्योर किसी और नेम के अंडर खेल रहे हैं या नहीं. We'll have to wait for the matches first, but the team depression is not there, who have won the previous few titles of ASUS ROG Showdown series. उन्होंने पिछले कुछ टाइटल जीत के गए हैं, but I'm not sure if they're playing or not. So Dream Esports, they really they are really they really have a chance if we don't have depression. But पीछे से कॉल जरूर आ रहा है पाए, शायद यहाँ पर है, शायद यहाँ पर टीम डिप्रेशन है under the name of Tarun Gill. So that's gonna be very very interesting because they are a very very aggressive team. But let me tell you this, 30 bomber drop किया हुआ है इस टीम ने एक गेम के अंदर. That's some crazy kills there. Hopefully we'll see the action today as well. और सारी की सारी teams वैसी perform करना चाहिए. 30 kills obviously is a big ask, but let's see. It's possible. It's possible. देखते हैं किस हिसाब से तरुण गिल की टीम जो कि पिछले 2-3 टाइटल जैसे आपने बताया ले चुकी है. It's a really really big thing. अगर 3 टूर्नामेंट्स आप सेपरेटली जीत चुके हो, that in itself makes you a very very good team. True, and that too with a great margin as well. I mean कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं था कि 20 पॉइंट से जीते, 25 पॉइंट से जीते. They were very comfortable in their spot. And that's all because of their aggressive play style. हाँ, एक दो गेम के अंदर वो थोड़ा early eliminate हुए because of the third parties and so. But game style नहीं change किया उन्होंने. They drop fight मिलता है, well and good. They're very happy to take it. पर अगर उनको drop fight नहीं मिलती and they find some good decent loot, shields आपको बेहतर मिल जाती है, purple shields if we see something like that, we will always see this team going in for the hunt. उनको वो shield बैठी हुई पसंद नहीं है, उनको डैमेज देके शील्ड अपग्रेड करने में ज्यादा अच्छा लगता है. एंड दे गो एंड दे टेक फाइट्स. 30 frags is what I'm saying. एक गेम के अंदर उन्होंने ड्रॉप किया था. I'd be expecting the similar performance coming in from team depression, especially Anirudh जो बहुत बेहतरीन खेलना जानते हैं. Recent times I'm not sure what legend is picking up, but the way back the games that I'm talking about, he used to play Wraith. He used to go and crack the shield, phase out करते थे, वापस से री-engage करके पूरी टीम वाइप आउट करने का अपने अंदर जज्बा रखते थे, और पीछे से जो सपोर्ट आता था उनकी टीम की तरफ से, that was just amazing. I'm not sure which legend he's going to play this time around, but I really hope we do see a good game coming in. Dream Esports किस तरीके से टैकल करेगी now, knowing that he has the side of team depression now under the name of team Tarun Gill is there. How will they tackle it out? Because this is another one of those aggressive teams, and अगर early fight हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक टीम तो नीचे ड्रॉप कर सकती है. जी हाँ, ऑब्वियसली अपकमिंग टीम्स में से हमें किसी ना किसी तरह का कोई अच्छा सा टैलेंट देखने को मिल सकता है जो तरुण गिल की टीम को वाइप आउट कर दे. तो दैट्स ऑब्वियसली गोना बी समथिंग वी आर गोना लुक फॉरवर्ड टू. बट आई गेस कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है गिवन देयर aggressive play style and 30 bomb capability, but obviously it will be a really really fun match to watch. सारी की सारी टीम्स अपनी अपनी पूरी कोशिश जरूर करने वाली है तरुण गिल से जो है अपना टाइटल लेकर जाए. कहीं ना कहीं वो चैंपियंस टाइटल लेकर जाना है, और जितनी ज्यादा मिलेंगे उतने बेहतर पॉइंट्स भी इन्हें ओवरऑल जरूर इनके पास आते हुए देखेंगे. Oh yes, and then you'll see them experimenting as well. As soon as few of their games go good, पहले 3-4 गेम अच्छे गए, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलेगा. उसके बाद वो लेजेंड्स के साथ डिफरेंट तरीके से खेलना स्टार्ट कर देते हैं. And at the time, Caustic was not a very good agent when these tournaments were previously going on. And तब भी हमें यहाँ पर उनकी तरफ से Caustic का इस्तेमाल देखने को मिला था to their advantage. So again, it's a team who know how to play this particular game. बीच में experimentation, बीच में fun भी करते हैं थोड़ा सा. But yes, overall, it's a very, very difficult team to watch out for. Team Bamboozled, another one of those teams जो कि काफ़ी बार मैं कहूँगा टीम डिप्रेशन के हाथों एलिमिनेट करी गई है. बट जब टीम डिप्रेशन अर्ली एलिमिनेट हुई है तो उन्होंने भी अपना झंडा गाड़ा है. ये भी एक ऐसी टीम है जिनका इन फेस गन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वो जो 3v3 सिनर्जी में आप बात करते हैं ड्यूरिंग द फाइट, दैट इज सुपर्ब फॉर द साइड ऑफ टीम Bamboozled as well. So this is another team you will have to look out for. Even team Dream Esports की हमने बात करी थी. That team usually relies upon getting the first knock and then trying to get in. स्नाइपर्स का थोड़ा सा इस्तेमाल उनकी टीम की तरफ से ज्यादा देखने को मिल जाता है. एंड एट दैट पॉइंट I'd like to see if we do see advantage coming in for the side of team Dream Esports, जहाँ पर वो पहले तो चार्ज राइफल यूज करते थे. Sometimes we didn't even see the longbow or the sentinel coming in for one of their players. So will we see advantage being picked up by one of the players from team Dream Esports? Again, it's another question which we'll have to wait and watch out for. And I'd like to see all of these players play their games, and how will it eventually pan out? Whatever it's gonna be, it's something we're gonna look forward to. But map की जहाँ तक हम बात करें, ये होने वाला World's Edge का map. The one problem with this map is that wherever you take a fight, all the teams around you usually hear you. So 4-5 teams at one point आपकी एक टीम पे fight करने आती है. तो third party is the best case scenario in this game, because इसमें कम से कम 2 से 3
टीम से तो ज्यादा ही आती हैं, और जब ऐसे आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है अपनी पोजीशन होल्ड करना, और कहीं ना कहीं वहां पे जो है टीम्स एलिमिनेट भी होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। सम टीम्स दैट मेक इट थ्रू आउट ऑफ ऑल दोस फाइट्स 30 किल्स जैसे बॉम्ब्स डालते हैं और फिर कुछ जो है टाइटल्स भी लेकर जाते हैं, बट दैट इज सम रेयर सिनेरियोस। बात करी जाए बाकी रोटेशंस की, सो ऑब्वियसली जोन इज गोना प्ले अ रियली रियली इंपॉर्टेंट सिचुएशन विद दैट। जिस हिसाब से हमें रिंग देखने को मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग टीम्स का रोटेशन देखने को मिलेगा, और पोजीशंस एज वेल, ड्रॉप लोकेशंस, हॉट ड्रॉप पोजीशंस भी हमें उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हुए देखने को मिलेंगे। बट होपफुली थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले स्टाइल सारी की सारी टीम्स की तरफ से देखने को मिले तो अच्छा है, बिकॉज़ ऑब्वियसली दीस आर द फर्स्ट मैचेस ऑफ ग्रैंड फाइनल्स। यू कैन मेक सम मिस्टेक्स, यू आर अलाउड टू मेक सम मिस्टेक्स, यू कैन एक्सपेरिमेंट थिंग्स। बेस्ट ऑफ 5 का पहले एक आध मैच में इवन इफ यू डोंट वर्क बट यू स्टिल गेट some of the basics right, and आपको समझ आता है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, so obviously it is gonna be a very good thing for you in the third or fourth matches and the upcoming matches as well. एग्जैक्टली, फर्स्ट फ्यू गेम्स टोन सेट कर लीजिए, नहीं वर्कआउट कर रही है कोई चीज़ आपके लिए, यू कैन रियली चेंज इट आउट। ट्राई इफ यू ट्राई टू गो अग्रेसिव, इट डजंट वर्क आउट फॉर यू। आपको कुछ ऐसी टीम्स मिल रही है जिनके साथ आप डुअल बैटल्स नहीं ले पा रहे हो, जिनके साथ आप प्रॉपर यूटिलिटी अपना सेट नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आपको एक फाइट के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। यू कैन बैक ऑफ, ड्रॉप लोकेशन में भी चेंज करिए इफ यू आर गेटिंग एलिमिनेटेड अर्ली ऑन इन द ड्रॉप। तो एग्जैक्टली फर्स्ट फ्यू गेम्स सेट द टोन अकॉर्डिंग टू यू, सेट द टोन आप किस तरीके से परफॉर्म करना चाह रहे हो। एंड देन अगेन यू टॉक्ड अबाउट अ वेरी क्रूशियल थिंग, रोटेशंस इज समथिंग जहाँ पर काफ़ी मर्तबा काफ़ी डिफरेंट टीम्स को ऑफ गार्ड पकड़ते हुए देखा है मैंने डिफरेंट टीम्स की तरफ से। सो दिस इज समथिंग दे रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट। बट हियर वी गो, गेम नंबर 1 पाए, गेम नंबर 1 हमारा शुरू हो चुका है। We already have talked about the teams to watch out for. I'd definitely like to see team Faded Wizards। जी हाँ, इस टीम के बारे में थोड़ी सी कम बात करी है। Warwick is going with the Seer, and we do also have an Octane for Arcstrix। थोड़ा सा different composition है as compared to the meta, but as soon as all of these teams get ready, I'd like to see some gameplays happening. And as far as you asking questions about Vantage, because I hardly saw any Vantage being taken. Seers हमें common थे थोड़े, Horizons भी हमें बहुत सारे देखने को मिले, rather Gibraltar थोड़ा सा कम देखने को जरूर मिला, but I guess एक आध है वहाँ पे कहीं ना कहीं। Caustics का भी बहुत अच्छा इसमें यूज करा जाएगा। But with that being said, मैप की तरफ हम जल्दी से जल्दी गौर डालते हैं। With once again it is gonna be World's Edge। Let's look at the plane path here। बहुत अच्छे compounds हमें आसपास देखने को मिल रहे हैं, which is gonna be Harvester Thermal Station। Landslide is all obviously gonna be a good position to drop in। Fragment East Epicenter, Survey Camp, बहुत अच्छे पोजीशंस हैं। लेट्स सी टीम्स किस हिसाब से किधर जाती है और कितनी टीम्स जो है हमें यहाँ पे ड्रॉप क्लैश लेती हुई बाय चॉइस और बाय मिस्टेक देखने को मिलेगी। It's a very decent plane path. No team will have any trouble whatsoever dropping into the location. And we do already see some teams, Skyhook के आसपास हमें 2 teams देखने को मिल रही है। Even near the region of Countdown, we do have two maybe 3 teams over in that particular area. And LP Warrior first blood draw करते हुए Calyx को pick off किया गया है, and that's the very first frag going their way. Yes, it is the first blood coming in. In fact, Shiva's going to take down the second one. Okay, we're seeing some numerous eliminations coming in. Not elimination, knocks तो यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, finish करने की कोशिश पूरी रहेगी। But I guess कहीं ना कहीं difficulty रहेगी, because we know इस game में specifically कितना difficult रहता है revive knock player को फिनिश करना, और जब तुम फिनिश करने जाते हो कहीं ना कहीं ओवर एग्जीक्यूट कर देते हो, कहीं ना कहीं ओवर एग्रेस कर देते हो, एंड उसी के चलते जो है आप एक गलती कर बैठते हो और अपनी स्क्वाड को कभी कभार गवा बैठते हो। बट इधर होपफुली टीम्स ऐसा नहीं कर रही हैं, और पढ़ते हैं जो टीम्स फाइट ले रही हैं इस टाइम पे। ओके, यहाँ पे होराइजन हमें देखने को मिल सकते हैं आसपास, इनके आई डोंट थिंक सो कोई और टीम एज सच विटनेस करने को मिलेगी। सो इट्स गोना बी स्मूथ सेलिंग फॉर देम, लूट आराम से करेंगे, एंड विद दैट रोटेशंस के साथ धीरे-धीरे बढ़ते हुए जोन की तरफ हमें देखने को मिलेगा। Again, the zone has gone all the way southwest, and a second zone भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। That means some bloodhound of Pathfinder has been able to find the next zone as well. But meanwhile, the Wraith has been spotted. Team Tarun Gill, the team to watch out for, push in किया गया है। There's the frag. There's the frag. Wait, that has been completely picked off, has been completely taken out, and that's the very first frag for this team as well. Early frags again flowing to multiple different teams. बेहतर weapons नहीं थे. Alternator, Volt is something that they've been able to gather out. But I hope they will be able to find some better loot coming in forward. Again, talking about the zone, बहुत ज़्यादा southwest गया है, and I really don't think यहाँ पर vehicles team इस्तेमाल करना चाहेंगे, because that's almost confirming your dead trying to rotate inside the zone. बहुत ज़्यादा sound मचाती है, बहुत ज़्यादा sound देती है, and as soon as you try to use it, आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास unwanted attention draw करते हो. Meanwhile, team Preds, that's a big W for Shiva right now. Golden Shield so early in the game.
Obviously, the loot here is crazy for him. Golden Shield this early is gonna be really okay. Gonna be useful in fights here. But अभी के लिए तो थोड़ा सा loot पे focus कर रहे हैं. बाकी टीम के players के पास भी level 4 आ चुका है. Purple Shields इनके पास आती हुई देखने को मिलेगी. I guess Replicator का पूरा फायदा जो है यहाँ पे उठाया गया है. दोनों की दोनों shields जो upgrade कर लिए इन्होंने. And gold का भी फायदा कुछ देर में हमें fight की तरफ देखने को मिलेगा. At the same time जैसे आपने कहा तरुण गिल की टीम ऑब्वियसली इतनी सारी टीम से इतनी सारे टूर्नामेंट्स जो है जीत चुके हैं. 2 से 3 टूर्नामेंट्स इट्स नॉट स्मॉल. सो अगर अब एग्रेसिव परफॉर्मेंस अब अगर अपना एग्रेसिव गेम प्ले नहीं दिखाएंगे और अभी भी डर के खेलेंगे तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना शो देयर पावर देयर स्ट्रेंथ देयर यू नो गेम प्ले एंड ऑल दैट. एग्रेशन नहीं दिखेगा. तो अगर जब तक वो लोग अपना एग्रेशन मेंटेन नहीं करते तब तक उनका ओजी प्ले स्टाइल कहीं ना कहीं नहीं रहेगा. तो जहां तक बात है इस मैच में भी सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं हमें पुश करते हुए देखने को मिलेंगे. ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज भी उसके पीछे रहेंगी और थोड़ा सोच समझ के करेंगे. बट कहीं ना कहीं गलतियां भी रहेंगी. देखते हैं किस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं. येट अनदर फाइट कमिंग इन फॉर देम. ओके यहाँ पे बीस्ट ऑफ हंट एक्टिवेट कर दिया जा चुका है. एक थोड़ा सा एग्रेसिव मूव. लेट्स सी आर दे गोना टेक दिस फाइट कंप्लीटली या थोड़ा सा कहीं ना कहीं फॉल बैक करके हील करेंगे. यस अभी टीम के पास उतनी बेहतर लूट है नहीं. दे स्टिल वर्किंग विद वाइट शील्ड. सो गेटिंग इनटू द फाइट I mean, मना जितना भी कर लीजिए टीम तरुण गिल, they'll do what they want. So, but accordingly they shouldn't. They shouldn't, you know, really jump into the fights. Weapons भी उतने बेहतर थे नहीं. White shields के साथ आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं. This is something you should not. This is not a fight you'd like to take. But let's see though if we do see some action coming into the kill feed or not. Dream Esports की बात करी जाए, आराम से अपने लिए लूट इकट्ठा करी जा रही है. No contention for them whatsoever, and we do see some good shields as well. Team Preds लोबा नाइट मार्केट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है. तो लूट में तो किसी भी तरीके की कमी रहेगी नहीं. But now let's see if they do try to take advantage of the early loot that they have by engaging into the fights or not. Groovy Gorillas again सिर्फ Phoenix के पास इस समय blue shield है. Other than that, all of his team working on whites, still trying to find the better loot. जी हाँ यहाँ पे आधी टीम्स इनके पास लूट इस टाइम पे नहीं है अनलाइक टीम प्रेड्स. बट जहाँ तक बात करी जाए यू डिडंट लुक एट दैट की सबसे पहली फाइट जो आपने बताई थी वो टीम शिवा की ही थी. तो दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड अ स्क्वाड वेट फॉर देयर टीम. 3 किल्स ऑलरेडी उनके हाथों में आ चुके हैं और उनके पास वन ऑफ द बेस्ट लूट भी एट दिस पॉइंट किसी के टीम के पास रहेगी तो वो उन्हीं के पास है. बाकी टीम्स आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ब्लू और व्हाइट शील्ड के साथ डिसेंट लूट अपनी जो है कहीं ना कहीं फिनिश ऑफ कर रहे हैं. थोड़ी टीम्स के पास रहेंगे पर्पल शील्ड्स. एक आध के पास बाय एनी चांस गोल्ड रहेगा. बट शिवा की टीम स्टार्टिंग से ही जस्ट इन कंटेंशन फॉर दैट चैंपियन टाइटल विद टीम तरुण गिल. लेट्स सी कैन दे मेक इट अप. Can they take them down? It's gonna be a really crazy fight to watch. But अभी के लिए थोड़ा सा कम जो है फाइट्स में विटनेस करने मिलेगी. टीम्स धीरे धीरे जा रही है. इन्फो लेके जो है धीरे धीरे रोटेट कर रही हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल लेने का भी इनका डिसीजन रहेगा. बढ़ रहे हैं इसी के साथ पार्टी मोमोज. अभी तक फाइट नहीं लिया है. आई गेस यहाँ पे किसी को स्पॉट कर लिया जाएगा. यहाँ पे एनिमी स्पॉटेड का पिंग भी आ चुका है. लेट्स सी आर दे गोना टेक दिस फाइट. थोड़ा सा अवॉइड करेंगे बट स्टिल अगर क्लोज इन करके इन्हें लगता है दे स्टैंड अ चांस टू विन दैट फाइट. दे माइट ओवर एग्रेस. दे माइट कम इट बट एट दिस पॉइंट दे आर गोना प्ले इट अ बिट सेफ टिल द टाइम दे डोंट गेट दैट फर्स्ट. Some knocks are coming here and there. अभी ने एक नॉक निकाला है. शिवा की तरफ से एक और नॉक देखने को मिला था. तो फाइट्स आई गेस डिफरेंट डायरेक्शंस में स्टार्ट हो गई हैं. एंड देन अगेन इट्स अ रिपीटर नॉक. तो आई डोंट थिंक सो एक क्लोज रेंज बैटल हुआ होगा. वी माइट सी अ शॉट just luckily landing in a very far away region जहाँ पर नॉक निकला होगा. तो आई डोंट थिंक सो कैपिटलाइजेशन उतना किया जाएगा. बट मीनवाइल वीगो जेम अर्ली फाइट. राजा बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया. शील्ड हैज बीन क्रैक्ड एज वेल. नीड्स टू फॉल बैक. विल डू सो. But the thing is उनके ओपोनेंट्स जो है उनको चेज करना चाह रहे हैं. यहाँ पर लगातार शॉट्स लिए जा रहे हैं. Scorpion is there, can throw the seer ability to just delay some time, and even the portal gets utilized as well. But let's see though if they are ready for the fight or not. LFT Genius को meanwhile LP Warrior ने यहाँ पर नॉक निकाला है. Ring Masters using the ultimate to get some rotations as well, but they have jumped right into the fight. Bloodhounds can से detect हो गए Ring Masters. Let's see how do they engage into the battle. Time your Preds team getting yet another frag for themselves. Absolutely wrecking players coming in front of them. But अभी के लिए बात करी जाए उंगा पुंगा as well कुछ fights ले रहे हैं. थोड़ा बहुत damage भी निकाला है. Loot की जहाँ तक बात करी जाए decent loot है. एक purple एक
blue and a purple and a gold shield as well. A decent loot. फाइट लेने के लिए अभी मेरे हिसाब से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है, सप्लाई बिन्स भी देखने को मिल सकते हैं इनके आसपास, और साथ ही साथ जो है मेरे को कहीं ना कहीं ड्रॉप्स भी आते हुए दिख रहे हैं। एक प्लेयर को सामने स्पॉट करा था जिप लाइन से ऊपर जाते हुए, एक आध बुलेट कनेक्ट होती भी है, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना मेक मच ऑफ अ डिफरेंस हियर। 1 और 2 बुलेट्स 10 और 20 एचपी रिड्यूस, आराम से एक शील्ड से लगा के हील अप हो जाएगा, बट दे हैव समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम देयर। दे आर नॉट गोना pursue this fight any longer क्योंकि zone के अंदर जाना है, and even Unga Punga knows that they have to start their rotation here. Loot even though इनके पास अब अच्छी खासी हो चुकी है, they should start rotating so that they don't get unnecessary damage from this ring here, और किसी ना किसी late rotation से fight लेना ना पड़ जाए। Let's see though, पार्टी मोमोज ग्रेनाइट को बहुत ज्यादा अर्ली ऑन यहाँ पर खो दिया है, एंड बैनर अभी तक एसएस रिकवर किया नहीं था, बट आई थिंक दे आर गोइंग फॉर दैट हीथन। He is in the near proximity. Meanwhile, team Bloodbath की बात करी जाए तो उनकी तरफ से भी rotations हमें देखने को मिल रहे हैं, but we do have another fight breaking down जहाँ पर टीम तरुण गिल I guess is on the verge of getting eliminated. They have been taken down. I guess 2 players उनके पूरी तरीके से pick off कर लिए गए हैं। यहाँ पे अच्छे खासे पिक्स जो है निकाल लिए जा चुके हैं, बट बात करी जाए जल्दी जल्दी हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली देयर। यहाँ बात करी जाए एलएफटी जीनियस जो एलिमिनेट हो चुके हैं, ड्रीम ई-स्पोर्ट्स की भी कोशिशें जारी हैं, इनको भी जैसे आपने कहा बैनर जो है मिल चुका है, इन्हें रेजरेक्शन देना है, रिस्पॉन करना है। दैट इज गोना बी डिफिकल्ट गिवन द फैक्ट दैट द बीकन इज आउटसाइड द जोन, और कहीं ना कहीं डैमेज भी उनका ना ले लेंगे। डेफिनेटली न्यूबियर इज गोना स्पॉट द होल टीम। हाथों में जरूर थी स्काउट विद 3x as well. I don't know how he didn't connect any bullets, but कहीं ना कहीं मूवमेंट सामने वालों की बेटर थी, तो he did try here. 140 damage already coming in. 10 evo points बाकी है for his blue shield here. Okay, another squad is gonna come in. I guess it is a flank of some sort. Okay, he's gonna find the first bullet, and with that his shield is gonna get upgraded as well. But सामने की तरफ मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है ये बॉक्स इन होंगे, और will they be able to play this fight better off than the team that's in front of them? Once again, team Predators are into the battle as well. Meanwhile, micro drones से यहाँ पर टीम नंबर 17 स्पॉट हुई है। Now again, I'm not sure their opponents what the strategy was, because seemed like an SMG and that too at a very long range. I guess सिर्फ डराना चाह रहे हैं, not get into the fight, because you not want to fight this at this particular range with an R99 against a scout right now. So I really think it was just about trying to gain territory, make sure कि हाँ opponent है, आप यहाँ push नहीं कर सकते. That's about it. Not indulging into the battle is what it felt like. Meanwhile, Hewan Gaming again in terms of loot they are superb. Frags भी कुछ यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाल रखे हैं. So again early stages की आप बात करिए तो एक अच्छा advantage पे नजर आ रहे हैं. Meanwhile, team number 17, all of these players with blue shields, I really think right now the play that they're trying to make, holding the cave region right now, would not be the best possible one, because apt amount of utility दिख नहीं रही है मेरे को इस टीम के पास to hold this area once a battle starts. या मेरे हिसाब से भी ऐसा ही कुछ हो जाता है यहाँ पे बात करी जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इनके एजेंट्स है, ओनली कॉस्टिक बिकम्स द मोस्ट यूजफुल एजेंट इन दिस सिनेरियो, और यहाँ पे ट्रैप्स भी डिप्लॉय करे हुए हैं, इवन दे आर नॉट लाइक properly deployed, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट ढंग से नहीं होने वाले, and even if they do get activate, उसको अवॉइड करना is gonna be quite easy. And with that we go जिम धीरे धीरे क्लोज इन करती हुई देखने को मिलेगी। फाइट अवॉइड कर रही है, यहाँ पे डैमेज थोड़ा निकाल चुकी है, इनफैक्ट नहीं यहाँ पे अभी भी तो होराइजन की एबिलिटी लेकर आए थे। लेट्स सी, आई गेस रोटेट करना है तो कहीं ना कहीं उन्हें वो टनल से ही करना पड़ेगा, जो भी है फाइट तो यहाँ पे लेनी पड़ेगी, because they are gonna be holding that anti-rotation position. And with that being said, Unga Bunga is gonna be taking yet another fight. Hitekod is gonna close in. They're gonna get a frag with that. Okay, aggressive play from them as well. अच्छे खासे frag जो है भी इकट्ठा कर लिया, and loot as well is gonna be pretty strong for them. On the side is gonna be Ring Masters here. Okay, trying to play out the zone here, not at all engaging in any fights whatsoever. A very safe performance in general. I guess okay, that's a good strategy as well. End के zone में जाके जब 5 या 6 spots रहेंगी, then they'll try to fight and then they'll get some picks as well and get a 6-2 victory. Oh, we go to gym early battle. Team number 17 as well. The thing I was talking about. बिल्कुल अच्छी पोजीशन में थे, नहीं रेज़ा ने दो नॉक्स अपनी टीम के लिए यहाँ पर सिक्योर किए. We go gym would be a great time to push in. There is just a single player and I guess he has been taken care of as well. Sneeze with the final frag. We go gym. डंबल्स बिल्कुल अपने ओपोनेंट्स के ऊपर डाल दिए हैं, पूरी तरीके से राउंड से बाहर करा है. अर्ली फ्रैग्स, नॉट अर्ली, मिड राउंड फ्रैग्स फॉर देम, and they also throw in the ability to make sure that no one can come nearby and shields automatically recharge कर दी जाएंगी. Team Vigo Gym, good start towards their third round.
Now let's see if they're able to continue this or not. Ringmasters again बहुत ज़्यादा पीछे हैं अभी लूट के अंदर. They really need to either find a fight and get those frags, या फिर अगर आप इतना ही पैसिव खेलेंगे तो होप करिए कि कोई और टीम बेहतर यूटिलिटी के साथ आपके ऊपर पुश ना करे and you're able to find yourselves in the final zones. Okay, yeah, that's gonna be their basic strategy here. अगर सेफ खेलना है तो obviously fights बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेंगी and थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे एबिलिटीज का भी बेटर यूज करना पड़ेगा फॉर द रोटेशन कॉज बाहर हैं इस टाइम पे जोन के और स्क्वाड्स जो हैं इनको कंप्लीटली पिक ऑफ करने की कोशिश करने वाले हैं. गिवन द फैक्ट दैट 9 स्क्वाड्स आर स्टिल अलाइव, बहुत सारी टीम्स ऐसी है जो एलिमिनेट हो चुकी है. ब्रेड्स की टीम भी इस मैच में एक बहुत एग्रेसिव स्टांस के साथ में खेलती देखने को मिल सकती है. 4 फिनिश पॉइंट्स अकेले, इनफैक्ट 8 फिनिश पॉइंट्स तो मैंने सिर्फ 2 ही प्लेयर्स के पास देखी है. अभी EXE is gonna use his 30-30, absolutely destroying the player in front of him. He didn't get a knock there, but obviously it was a lot of damage here. बात करी जाए 1000 डैमेज के ऑलमोस्ट आ चुके हैं क्लोज. 1050 और डैमेज अगर आ जाता है तो 1000 का जो है यहाँ पे डैमेज इनका कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा और इसी के साथ आगे भी बढ़ेंगे. अभी के लिए थोड़ा सा पैसिव, थोड़ा सा स्लो, because for them they do need to get the first pick and they do need to get their timing right, because timing is gonna be mostly everything given this zone is so small and teams will be rotating as well. थोड़ा सा यहाँ पे ability use करा जाएगा होराइजन का. Those missiles aren't gonna do much damage there, but obviously कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर push करने में है प्लेयर्स को हेल्प जरूर करेगी एंड प्रॉब्ली उसी के चलते जो है थोड़ा सा डैमेज भी मिल जाए. विद दैट बीइंग द केस जोन की तरफ जहाँ तक बात करी जाए, जोन इज रियली स्मॉल, इट्स कंप्लीटली टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड. और कहीं ना कहीं बात करी जाए शिवा की टीम के पास एक अच्छा खासा जोन का एडवांटेज आ चुका है. दे माइट बी द ओनली स्क्वाड एट दिस पॉइंट जो कि जोन के एक सबसे अच्छे पोजीशन पे होंगे. Exactly, they have a really decent spot. Even एक hardship को survive कर सकते हैं समय in the spot that they are. But meanwhile, if you look at the remainder of the team, they're really trying to fight it out. They're really trying to get information around themselves. And this area लावा साइफन एक ऐसा area है यहाँ पर आप नीचे drop कर नहीं सकते. You will get some damage onto yourself and opponents जो है वो high ground पे already बैठे हुए हैं काफी सारे. Take griefers into account. Now they'll have to move inside the zone, but till now they were in a very great spot. Now let's see decision किस तरीके से आता है. Ropeway है उनके पास सामने जाने के लिए, but the question is have they cleared an angle? Charge rifle spots the player, but that's just tip damage. But a great shield break coming in. The blue shields now showing the restriction that it has. सिर्फ एक charge rifle का shot and you've been completely cracked. You need to go and reset. And again another good shot being connected by space. The griefers, they're looking good, but again बहुत एक मुश्किल आने वाला है इनको जब जोन के अंदर रोटेट करना पड़ेगा in the next 30 seconds. Just look at this Horizon's damage. It's 1700 and even after that, she hasn't gotten one kill. Just think about the fights they might have had. And that charge rifle is absolutely demolishing each and every player coming in front of him. यहाँ पे बात करी जाए तो शील्ड सारी टेक डाउन हो रही है, बट आई गेस कहीं ना कहीं जो ड्रॉबैक थोड़ा सा पड़ जाता है चार्ज राइफल का यही रहता है कि आप शील्ड टेक डाउन कर पाओगे, उसके बाद जो है आप एचपी पूरी ना टेक डाउन कर पाओ. इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं आपके 2 प्लेयर्स जो है बाकी आगे थोड़ा एग्रेसिव स्टांस पे होल्ड करने चाहिए ताकि जैसे आप शील्ड डाउन करो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पुश इन एंड दे गेट द स्क्वाड वाइप एज वेल. ग्रीफर स्टिल होल्डिंग द सेम पोजीशन. अभी भी एक अच्छी खासी ओके अभी भी अच्छा खासा काउंटर कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं प्लेयर्स को निकालने की. नीचे इन्हें पता है इनके इंसिस्टेंस इन द प्लेयर्स घूम रहे हैं. ही कैन इवन सी देम, सी हिज एबिलिटी बीइंग अ रियली यूजफुल थिंग एट दिस पॉइंट और बहुत अच्छे से भी जो है इसे यूज करा जाएगा. होराइजन गिविंग देम अ हार्ड टाइम हियर. Phoenix is really low. One clip almost down here. Rishi down to his last cell. Let's see क्या कुछ कर पाते हैं. This was trying to fight out this fight. सामने के player यहाँ पे shields खो चुके हैं. Sarasa has also been picked off. Scorpion is gonna focus on that revival because of fight करने से better वही रहेगा. His ability is also turned on. With that, he is gonna have some advantage in this fight, and hopefully they might win this fight as well. ग्रीफर्स ड्रॉप किया था इनके ऊपर ओपोनेंट्स, दे हैव बीन एबल टू डील विद देम, बट देन अगेन फाइट पूरी इसी कंपाउंड के ऊपर आ चुकी है तो किसी भी टीम के लिए यहाँ पर आसान रहने नहीं वाला है. वी गो जेम ऑलरेडी वन ऑफ द प्लेयर्स इज डाउन ऑन द ग्राउंड, बट दे स्टिल डू वांट टू फाइट इट आउट. द EVA 8 dishing out great damage, but the knock is yet to be received. The squad is yet to be eliminated, but it does. Scorpion with the final few shots, I guess, अभी bleed out हो चुके हैं पूरी तरीके से, and the resurrection is coming in as well. Hevan meanwhile दूर से यहाँ पर शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. We do also have the Caustic try to get any information that he can and will also have the trap set up.
Hevan, Yeah. they have revealed two different players. There's 5 squads remaining in the final zone. They also do need to get inside the circle. They also need to get inside the zone. Now let's see if they're able to do that or not. Good HPs on all of these players. That Bath again sucks with a very outdated shield right now. Blue shield के साथ fight करना इनके लिए आसान रहेगा नहीं. Vertiq is trying his level best to make sure he keeps his opponents at bay. Bloodbath, one of the players has been able to sneak inside the zone. The thing is, उनके सामने अब कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें होने वाली है because they really tell need to me be that, focused. It's just a single there player is there no as leader well. of mine. Hevan, red shield and purple shields for them. Warlord, I'm not sure if this ultimate is ready or not to get to help to go for the aerial rotation or not. Vigo Jim, they're preparing themselves. They're again and again throwing the seer ultimate, making sure कि उनके पास information की कमी किसी तरीके से ना हो. But they're holding and they're making sure कि जो shield swap से quickly हो जाए. Loot crate से बाहर निकाल दी गई है. And as soon as they engage into the fight for a reset, they just pick up a different shield. Utility की से काफी अच्छा खासा chip damage निकालने में कामयाब. But let's see if they're able to close out the game or not. It is gonna be really difficult. Krex is gonna push alone here. Kahin na kahin difficult tha, but okay, he got out of there at this right time. And on the other side is gonna be Vigo Jim holding one of the best positions at this point. और यहाँ पे Seer की ability इनको भी कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर रही है. Seer getting out seared here, and he is gonna get tagged once again. As you mentioned, सारी shields यहाँ पे बाहर निकाल के रखी है for the shield swap. Vertiq. That ability is not gonna be much useful. Vertiq down 1 HP. He's gonna use the shield battery. Hopefully it comes in on time. He's gonna get spotted again. Once again, down to 1 HP. But this time, unfortunately, he's not gonna get enough time to heal up. पीछे की तरफ से Vigo Jim की squad पूरी तरह से अपनी position का फायदा उठा रही है. And on the other side, this team has been completely boxed in. Third party coming in for team Bloodbath here. कहीं ना कहीं struggle कर रहे हैं. कहीं ना कहीं fight भी ले रहे हैं. Revivals भी दे रहे हैं. They are completely in one big pickle here. Creepers on the other side trying to get some damage here. कुछ अच्छे खासे kills भी आ चुके हैं. यहाँ पे kill leader is gonna go down. Because he coaches and ROG Star is gonna connect as well. It's gonna take down 2 shields simultaneously. And that's last person standing. Can we see a 1v3 squad wipe? Last person 1 HP, and with that is a squad wipe coming in as well. 4 squads surviving, 11 players standing. What do you think which team is gonna make it out of this game? How much Ghana is as getting? the champion? Space insane. He is playing it very brilliantly. लगातार नीचे जाते हैं, डैमेज अपने लिए इकट्ठा करते हैं, gets back up using the Valkyrie ability. Meanwhile, Vigo Jim, they are down to 2 players, but they're dishing out a lot of damage themselves as well. Scorpion कम जरूर हुई है HP, but he'll be able to put down a battery very soon and get back into the battle. Scream brought back into the game. Has to loot for himself with a white shield. It's gonna be super difficult. Shots उनके ऊपर लगातार लिए जा रहे हैं. Begum wants to get that revival, and Jim meanwhile using the seer ability to restrict it to make sure that the revival does not come in for a few more seconds. Great usage of the seer ability, and here comes the damage as well. Shots काफी accurate. He is getting that chip damage and plus add the zone damage to it as well. This is not looking good at all for Team Hevan. बहुत ज़्यादा pinch किया जा रहा है उनको. Look at it. Their whole team needs a reset right now, and they're not being allowed to do so. Vigo Jim in a very strong position. Find another opponent, takes those shots, gets another shield down. Now this is just a time you push. Sheesh, HP ज़्यादा है नहीं, but पीछे से team का support बेहतरीन है. The EY giving a lot of damage. The final few frags goes down, but now Vigo Jim, will they be allowed to reset? They don't need to because the shots are there, and Vigo Jim are the first game's champions. And yes, we go with Jim, make it happen. They're gonna get the first match down for them. Absolutely demolishing the whole lobby. Enormous damage coming in from them as well. Brilliant rotations, brilliant holds, and some brilliant damage strategies as well coming in for them. बहुत अच्छे से perform करा. Overall gameplay was just absolutely crazy from them. डोमिनेशन हमें जरूर देखने को मिला. अगर इसी के साथ कुछ ही देर में हमारे को स्कोर बोर्ड में एग्जैक्टली देखने को पता चल जाएगा कि which team is at the top of the leaderboard right now and which team got the most amount of kills. But कहीं ना कहीं team Tarun Gill, they did try their best. They did get a lot of frags at the beginning of the game, but कहीं ना कहीं ज्यादा देर survive नहीं कर पाए. I guess the rotations were a bit tricky, और कहीं ना कहीं third party हो गए थे due to some reason or the other. But they did try their best. Unfortunately, we didn't get them as the champions, but we did get a beautiful team getting a brilliant match for themselves. And with that, we'll be completing the first match. What do you think? How did everyone play, Fritz? Oh, it was a great game.
थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स जोन था, दैट आई डेफिनेटली सेज यूजुअली ऐसे जोन्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं बिकॉज यूजुअली वी डोंट सी सच अ साउथ वेस्टर्न जोन एंड एट द एंड तो इट कंप्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड. इट वाज नॉट अ वेरी यूजुअल जोन. लावा साइफन के आसपास खेलने में आई डोंट थिंक सो कोई भी टीम कंफर्टेबल रहेगी बिकॉज यू रियली कैन नॉट प्ले ऑन द ग्राउंड. यू रियली नीड टू यूज दोस रोप वेज एंड कहीं ना कहीं टीम्स अनकंफर्टेबल थी. वी इवन डिड सी टीम शिवा ड्रॉपिंग इन ऑन टू टीम वीगो जिम एंड अच्छी तरीके से उस चीज़ को हैंडल करने में कामयाब हुई थी टीम वीगो जिम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यूटिलिटी डिड दे हैव. बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था थर्ड पार्टीज का, दैट आई नॉट टेक अवे फ्रॉम देम. बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज हुई हैं इस पूरे गेम के अंदर, बट ओवरऑल अ फिनोमिनल गेम फाइनली कमिंग टू एन एंड. Now guys, we'll be throwing things to a very short break. Break के उस पार we'll meet you with match number 1 standings.
Am I audible? After the break, me and Pi, we are back at it again. Game number 1, Pi, बहुत ही ज़्यादा interesting, काफी ज़्यादा मजेदार भी, and we did have team. We go to the gym winning it out. Now up next up is the match standing. We'll come about that. But game number 2 से ये game देखने के बाद Pi, I'll ask you, what are your expectations from game number 2 now? Whatever my expectations were are now irrelevant. But बाकी जहाँ जितना भी हमने गेम प्ले देखा उसके हिसाब से तो बहुत क्रेजी ही मैच होने वाला है. But with that, map wise scoreboard is with us here. We go Zim, obviously getting the champions, getting the first position with 12 RP, 11 kills as well, 23 total in 23 in total, a good score for them as well. Reds here securing the second position, 3 points for their position, 12 kill points and 15 in total. Hevan Gaming securing that third position with 9 points, 6 kills and 15 in total. टॉप 3 टीम्स डिड परफॉर्म देयर लेवल बेस्ट. इनफैक्ट बाकी टीम्स की तरफ से भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला. बट आप कहीं ना कहीं देखो जो स्कोर का गैप बढ़ जाता है वो कितना ज्यादा है फर्स्ट टू सेकंड टीम्स में. ऑब्वियसली रैंकिंग पॉइंट्स डू मैटर अ लॉट, बट स्टिल कहीं ना कहीं प्रेड्स की टीम थोड़ा सा लैक कर रही है यहाँ पे. एटलीस्ट हमें 8 पॉइंट्स का यहाँ पे कम से कम फर्क देखने को मिल रहा है. एटलीस्ट स्किल्स अगर थोड़े ज्यादा करे होते तो आई गेस दे कुड हैव समहाउ मैनेज्ड टू गेट क्लोज टू देम. बट दिस मैच इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग और सारी की सारी टीम्स को अब पता चल गया है कि हमारे को क्या एग्जैक्टली करना और कितने पॉइंट्स लेने हैं टू गेट टू द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड और एटलीस्ट इन द टॉप 3. Oh, for sure. Preds, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था टीम प्रेड्स की तरफ से. The rotation that they're using the Valkyrie, they directly dropped upon Vigo Gym onto the compound that this team was holding. और उसके बाद बाहर से जो थर्ड पार्टी हुआ उसके चलते कहीं ना कहीं फोर्स हो गए अंदर पुश इन करने के लिए. एंड वीगो जिम दोनों हाथे खोल के तैयार थे बिल्कुल फ्रैग्स देने के लिए. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद देम. बट उससे पहले अच्छा टीम प्रेड्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया था. ड्रॉप लेते अर्ली एक एलिमिनेशन दिया, यूज देयर लोबा ब्लैक मार्केट टू एनहांस देयर लूट, एंड उसके बाद लगातार स्क्वाड्स पे स्क्वाड्स वाइप किए. 12 किल पॉइंट्स का मतलब है आपने 4 स्क्वाड्स अपने ओपोनेंट्स के एलिमिनेट किए. दैट्स नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम देम. जस्ट इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग पॉइंट्स अगर थोड़ा सा लकी हो जाते जोन के साथ तो एक रिवर्स चीज हमें देखने को मिल सकती थी जहाँ पर वीगो जिम शायद थोड़ा सा नीचे होती. बट एनीवे, ग्रेट जॉब डन बाय ऑल ऑफ दीज टीम्स फॉर द वेरी फर्स्ट गेम, स्पेशली द टीम्स इन डबल डिजिट पॉइंट्स. अगेन 12-13 पॉइंट्स का ये कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं. एक अच्छा गेम एंड यूल इजीली बी एबल टू कवर इट आउट. DT हार्डस्टार टीम, रेलेंटलेस ई-स्पोर्ट्स वेक्टर, इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा कि यस द फर्स्ट गेम डिड नॉट गो एज गुड, लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव दिस इन द नेक्स्ट गेम. तरुण गेल, I did not see good loot for them at all, and उसके बाद भी उन्होंने फाइट फोर्स करी and they met their match, they met their opponents, जहाँ पर पूरी तरीके से इनको डिमोलिश किया गया था एंड ओवरऑल 9th पे फिनिश किया है 3 पॉइंट्स के साथ. They really need some good loot. ड्रॉप लोकेशन में कहीं ना कहीं सजेस्ट करूंगा उसके लिए चेंज कर लीजिए अगर लूट के अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो तो. But otherwise a good game, a great game coming in, but I'd like to see some consistency as well now. वीगो जिम अच्छी बात है, पहला गेम आपने बहुत अच्छा खेला, बट नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप सेकंड गेम्स के स्टार्ट होते आप एलिमिनेट हो रहे हो. दिस इज समथिंग आई हैव सीन वेरी फ्रीक्वेंटली व्हेन न्यू टीम्स स्टार्ट टू परफॉर्म. पहले 2 गेम्स अच्छे खेले, पहला गेम अच्छा खेला, बट उसके बाद फॉलो ऑफ करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वापस ले पकड़ ही नहीं पाते. सो वीगो जिम इस चीज़ को पकड़ना है. बहुत अच्छा खेला है फर्स्ट गेम. आई होप यू आर एबल टू जस्ट रेप्लिकेट व्हाट यू डिड इन गेम नंबर 1 एंड सिमिलर परफॉर्मेंस दीजिए गेम नंबर 2 के अंदर. गन फाइट्स काफ़ी अच्छा था,
टीम के साथ एज अ ग्रुप स्टिक करा है इन्होंने, एज अ ग्रुप हमेशा पुश इन किया है। अगर आप बात करें तो जहां भी नॉक मिला है एज अ ग्रुप, एज अ यूनिट, दे डिसाइडेड टू पुश इन एंड फेस टू फेस बैटल में ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन यूजिंग द स्नाइपर राइफल्स अ लॉट। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर टीम वी गो टू जिम इन द फाइनल फ्यू जोन्स। अर्ली फाइट्स किस तरीके से नेविगेट करते हैं, दिस इज समथिंग आई स्टिल लाइक टू वॉच आउट फॉर। जी हाँ, जैसे आपने कहा बहुत एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे रहता है कि सारी की सारी टीम्स कितना कंसिस्टेंट परफॉर्म करती है। कुछ टीम्स जैसे हमने कहा दो पहले के 2 मैचेस में अच्छा खेलती है, फिर आगे जो है वो पिकअप अपना पकड़ ही नहीं पाती है और फिर कहीं न कहीं यस। बॉटम ऑफ द लीडर बोर्ड की तरफ पहुँचती है। वो स्ट्रगल बन जाता है। कुछ टीम स्टार्टिंग में परफॉर्म नहीं करती बट दे स्लोली पिक अप देयर पेस, देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड एट द एंड ऑफ द डे यू सी देम एट द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड। कंसिस्टेंसी एट द एंड ऑफ द डे बिकम्स द मेन पॉइंट। अगर सारी टीम्स कंसिस्टेंट है तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा स्कोर आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। They won't have to ट्रू। try too hard, they won't have to get too many kills, they won't have to get like the zones right or anything. They'll still manage to get a decent position, get some decent kills and still get the points they wanted or they thought of, and then at the end of the day they'll get the top of their leaderboard card. दैट्स फॉर श्योर। जो टीम्स एक्सपीरियंस्ड हैं वो कहीं ना कहीं इन 10 गेम्स के अंदर तो कुछ ऐसे गेम्स आएंगे जहाँ पर वो दिखेगा एंड वंस दे आर एबल टू पिक अप द पेस, वहाँ से वो फिर पीछे नहीं देखते। एंड सम टीम ड्रीम esports is one of those teams which I really know. I know that they'll be able to mount a comeback on this very day. Last के 2 गेम, लास्ट के 3 गेम्स, it doesn't matter what games they'll start their journey on way back up to the top 5 at least। मेरे को लगता है टीम ड्रीम esports डे एंड के होने तक खत्म कर सकती है। Let's hope for the best possible games for the other teams as well. वी गो जिम, आंखें ज़रूर आपके ऊपर रहने वाली है बिकॉज पहला गेम आपने बहुत अच्छी तरीके से निकाला है, रोटेशंस काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा कंपाउंड आपने होल्ड किया था। बट आई डू होप एक डिसेंट जोन्स बने बाकी टीम्स के लिए भी, ताकि उनको जगह मिले एटलीस्ट कंटेस्ट करने के लिए, आपको लावा के ऊपर ना भागना पड़े। दैट इज समथिंग आई एम रियली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, फ्रॉम एटलीस्ट एपेक्स गॉड्स राइट नाउ। बट या ऑन द अदर हैंड टॉकिंग अबाउट द अदर टीम्स, अगेन बहुत अच्छा खेले स्टार्टिंग में, बट उसके बाद कहीं ना कहीं रोटेशन के चक्कर में पूरी तरीके से एलिमिनेट हुए हैं। होप सो सेम सिचुएशन उनको दोबारा से फेस ना करनी पड़े और एटलीस्ट रेडी रहे। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई से द जिब्राल्टर पिक कम्स इन वेरी हैंडी। यस, आपको वैल्करी रोटेट करवा के एक बहुत अच्छी पोजीशन पे लेकर आ सकती है, बट देन यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सराउंडिंग्स। ड्रॉप करते अगर आपके पास एक जिबी डोम रहे, ताकि किसी भी तरीके का आपने ड्यूरिंग द फ्लाइट डैमेज लिया हो उसको रीसेट करने के लिए आपको हेल्प हो जाए, दैट कुड बी रियली रियली बेनिफिशियल। वो 15 सेकंड्स का आपको एक बफर पीरियड मिल जाता है जहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो व्हाट टू डू नेक्स्ट इफ यू आर बीइंग third party and you know there's a squad right below your feet. That 15 seconds can help you a lot. But then again, different composition था, चेंज करते हैं तो I'm not completely sure. But अभी तक तो वर्क किया है। लोबा I don't think so रिमूव होने वाली है बिकॉज वो अर्ली लूट का तो बहुत अच्छा एडवांटेज उठाया था प्रेडिटर्स ने। LP Warrior again another team which was not able to really perform to that level. But I do hope कि गेम नंबर 2 के अंदर उनकी तरफ से भी एक वापसी देखने को मिले। जैसा भी परफॉर्मेंस रहा, टॉप टीम्स ऑब्वियसली वेल प्लेड फॉर देम, एंड जो नहीं कर पाई we'll take it as a warm up match for them, and from this match we'll see them performing as well. इसी के साथ देखते हैं इस मैच में जो है सारी टीम्स अपना एक नया मैच, नई शुरुआत किस हिसाब से करती है, एंड होपफुली जो है हमें जोन भी ऐसा देखने को मिले जहाँ पे एटलीस्ट स्क्वाड्स एटलीस्ट 2-3 रहे तो सबके पास थोड़ा डिसेंट कवर रहे। लावा में जो है अपनी एचपी कम करवाते हुए ना घूमे, दैट वुड बी वन ऑफ द मेन रीजंस। पिछले मैचों में मेजॉरिटी स्क्वाड्स बहुत स्ट्रगल करती हुई कहीं ना कहीं देखने को मिली और सिर्फ एक ही टीम जो है जिम वाली टीम थी, एक पोजीशन उन्होंने होल्ड करा, एंड फॉर्चुनेटली फॉर देम जोन्स भी समहाउ उनके अराउंड आ रहे थे और वो मैनेज कर भी रहे थे कि उसके अराउंड खेलना, एंड ऊपर नीचे करके जैसे आप बता रहे थे पूरा का पूरा वाल्करी का एबिलिटी का यूज करा उन्होंने, और जो भी उनके पास अवेलेबल था सब कुछ यूज करा। सियर का भी बहुत शानदार इस्तेमाल करा। इनफैक्ट इन द एंड फाइट आप नोटिस करो 6 प्लेयर्स को एट द सेम टाइम उन्होंने एक ही अपने tactical ability से अटैक करा था। that to not with his ultimate tactical ability, that is really really a good thing, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिला भी एंड में अच्छे खासे डैमेज भी उन्होंने अकेले अकेले निकाल लिया और पीछे की तरफ से सपोर्ट भी पूरा देखने को मिला। with that they got the match and second match इसी के साथ देखते हैं किस हिसाब से रहेगा। एग्जैक्टली वो सियर की एबिलिटी से सिर्फ डिटेक्ट नहीं पाए, रिजरेक्शन रोक दिया। रिवाइव कर रहे थे प्लेयर, वाज ऑलमोस्ट देयर टू पिक हिम अप बट इट गॉट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द सियर एबिलिटी। सो दैट इज समथिंग जो आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, बट इट डज हैपन एंड उसके बाद आपके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है बिकॉज एट दैट टाइम यू आर वेरी वल्नरेबल। बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हो जब रिवाइव कर रहे होते हो आप अपने ओपोनेंट अपने टीममेट को अपने ओपोनेंट से छुप के, बट अगेन throwing that ability, disrupting it, making sure कि आपको वापस से वो समय आपको इन्वेस्ट करना पड़े is not going to be easy at all, and great
यूटिलिटी यूजर्स कमिंग इन. अगेन एक्सपीरियंस दिखा है इस टीम के पास किस तरीके से परफॉर्म करना है, जी बिकॉज मेनी अ टाइम्स यू सीन टीम्स falter good games in which they have great position by just randomly pushing in. I guess that this is what happened with the team that ended fourth, I guess, जिनके पास एक अच्छा कंपाउंड था, बट दे थॉट कि सामने फाइट चल रही है, थर्ड पार्टी कर देते हैं, एंड दे गॉट देमसेल्व्स फ्रॉम द टीम जो कि अपहिल बैठे हुए थे, जो कि ओवरऑल आई गेस थर्ड पे उन्होंने फिनिश ऑफ किया है. थर्ड पार्टी हुए, उसके बाद इट वाज अ वन वे स्ट्रीट, उसके बाद दे हैड टू रन इनटू द जोन एज वेल. उनके पास ऐसा ऐसा कोई रोटेशन देने के लिए लेजेंड था नहीं हेल्प करने के लिए, सो दे वर जस्ट कंप्लीटली टेकन डाउन फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट साइज. Even I don't know किस किस ने उनको मारा है. So this is something that they need to be careful about, playing with information, playing with the rotations, and at the end, if nothing works out, try to use your utility first rather than you yourself going and trying to scout things out. That should be the last resort. That should really be the last resort कि बस अब आप तीनों एक साथ निकलो गुट में, जहाँ से शॉट है तीनों एक तरफ टर्न करके try to get that counter. Now that's the only way you can really go if you don't have any sort of utility available. But yes, I'd like to see a better game from many different teams coming into the second game, and I know this will be the case because अभी आपको जगह नहीं मिली पैर रखने की. Once the zone starts shifting more towards the center, एक ऐसे एरिया पे बनना स्टार्ट करेगा जहाँ पर आपको जगह मिलेगी, जहाँ पर आपको एप्ट कवर मिलेगा खेलने के लिए, and I know many teams will come out and perform brilliantly. जी हाँ, ऑब्वियसली इस मैच में बेटर जोन तो इज नो डाउट गोना बी सीन हियर ऑब्वियसली, क्योंकि पिछले मैचेस True. में एक्सट्रीम जोन बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो इट्स अ रेयर सिचुएशन दैट विल सी इट अगेन. तो जिधर भी रहेगा स्क्वाड्स एटलीस्ट उधर खेल के प्रैक्टिस्ड है. उस कॉर्नर्स में भी गए जरूर हैं सारे प्लेयर्स, सबने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करा है वहां पे, बट स्टिल आप वहां पे एंड जोन ज्यादा प्ले आउट नहीं करते, तो वहां पे Exactly. इसी वजह से कहीं ना कहीं चोक जो है हमें मेजॉरिटी स्क्वाड्स करती हुई देखने को मिली, जो है नहीं हमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला. बट स्टिल सबने कोशिश करी. इस मैच जैसे आपने कहा बेटर जोन जरूर हमें देखने को मिलेगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है टीम्स भी बेटर परफॉर्म जरूर से करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द डे. वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मैचेस फॉर देम टू गो, एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे और बेटर जो है आइडिया लग जाएगा उन्हें सारी टीम्स के रोटेशंस का भी, और एग्जैक्टली किस किस टाइम पे कौन सी टीम फाइट लेती है और कौन सी टीम जो सेफ खेलती है, वो भी धीरे धीरे जो Yes. अंडरस्टैंड कर लेंगे. तो आई गेस कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे सारी टीम्स उसके अकॉर्डिंग खेल लेगी, और फिर शायद हमें एक अच्छा सबकी तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा. I hope so, because if you remember by team number 17 is एक ऐसी टीम थी जो कि एक केव होल्ड करने की या एक कनेक्टर एरिया होल्ड Right, करने right. की कोशिश कर रही थी बेसिकली. But the legends that they have were not really meant for holding except for a caustic, yes. And उनके भी traps दोनों तरफ नहीं थे. It was just at one end of the cave. दूसरी One तरफ side, yes, both they the were trying to play as a team, and पीछे से अगर आते तो obviously traps would have been detected. But then again, राउंड नंबर 3 चल रहा है, आपके पास ब्लू शील्ड्स है, you have a bloodhound, you have a caustic, and if I remember correctly there was another sort of legend जो थोड़ा सा fragging department में ज्यादा बेहतर रहता है. It was that sort of legend playing in that particular lane and trying to hold. I mean, I come to I can agree आपको स्लो खेलना, आपको पैसिव खेलना, but then choose legends according to it. ऐसी टाइम पे आपको वो एक वॉटसन बहुत हेल्प कर सकती है, जहाँ पर आप अपने लिए इलेक्ट्रिकल फेंसेस लगा सकते हो अराउंड दीज पर्टिकुलर एरियाज, एंड देन ट्राई टू होल्ड एंड बी रियली हेल्पफुल. जनरेटर आ जाता है तो उसके बाद तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने शील्ड्स रिचार्ज कर सकते हो विदाउट केयरिंग मच अबाउट, एंड द इट आल्सो पुल्स योर ओपोनेंट्स इनटू इट. सो अगेन होल्ड करना विद अ वॉटसन वुड बी मोर will make more sense rather than, according to me, having a caustic. So I'd really love to see teams playing according to their game style, adapting according to the legends that they have. And अगर अपने play style को adapt नहीं कर सकते तो at least change your legends, ताकि आप उस तरीके से खेलने में और थोड़े से ज़्यादा comfortable रहो. Yeah, that is obviously one of the reasons. But कहीं ना कहीं पिछले मैच में जो तीसरा प्लेयर था उनकी टीम का, that was Valkyrie. In fact, आप टनल में उनका Oh, okay. tactical ability यूज नहीं कर सकते, Yes. because they'll touch the roof and they won't even drop down to the players close to them. So कहीं ना कहीं Valkyrie के साथ वो पोजीशन खेलना डिफिकल्ट था. कॉस्टिक को जिया बेटर यूज करा जा सकता था, बोथ साइड पे ट्रैप लगाते, बीच में जो अपना अल्टीमेट फेंकते, तो कहीं ना कहीं पुश करना सामने वाली टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाता है. They could have used that ability to their advantage and flank या कुछ करके जो है आराम से वो आउटप्ले कर सकते थे. बट वही कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इश्यूज, प्रेशर में जैसा आपने कहा मिस्टेक्स हो जाती हैं. विद दैट आई गेस इस मैच में वो गलतियां ना दोहराए, कोई भी टीम अपने पिछली मैच की गलतियां ना दोहराए, यही कर लेगी अगर टीम्स, तो उसी के साथ ही जो है बहुत इंप्रूवमेंट उन्हें अपनी अपनी गेम्स में देखने को मिलेगा, और अपने परफॉर्मेंस में भी इन जनरल बहुत ज्यादा उसे विटनेस करने को मिलेगा. प्लेयर्स इसी के साथ बात करी जाए तो कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जितने में जुड़ रहे हैं हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके फेवरेट कैरेक्टर का. आप कौन सा कैरेक्टर मेन करते हैं, व्हाई डू यू मेन हिम? I love Wraith.
I mean, ये कैसा Who legend है that true player? I'd say oh yes for sure this is one of those see I was a very new guy in PC world. I used to play a lot of mobile games और PC में थोड़ा नया था. My friends told me use this, तू जा क्यू दबा बंदे पे शॉट ले क्यू दबा वापस आ जा. I said okay ठीक है करते हैं ऐसा. And then I started playing little bit Wraith, थोड़े बहुत plays करने की कोशिश करी, tried to use the portals to our team's advantage and धीमे धीमे it all panned out. So I really love Wraith. I really hate Gibraltar बिकॉज एक तरीके से डायरेक्ट काउंटर कर देता है वो इस पर्टिकुलर लेजेंड को. आप जाओ डैमेज दे दो पर वापस फिर आपको टीम सपोर्ट नहीं कर सकती एज सून एज दैट डोम गोज डाउन. सो आई रियली हेट जिब्राल्टर व्हेन आई एम प्लेइंग रेथ. पर देखने में तो मजा आता है भाई कहीं ना कहीं जिब्राल्टर प्लेयर्स को एंड रेथ प्लेयर्स को भी. अगेन अनिरुद्ध इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स व्हेन आई कास्टेड माय फर्स्ट एपेक्स टूर्नामेंट उनसे काफी सीखा था, काफी देखा था किस तरीके से खेलते हैं. Peacekeeper is a weapon which I discovered after seeing him play कि अच्छा ऐसा powerful weapon है. पहले ADS नहीं करता था, पहले I did not use ADS a lot using that Peacekeeper, तो shots कहीं भी जाते थे. But then when I discovered the ADS Peacekeeper, sometimes EY8 as well, it was a completely different thing because आप shield damage करो सिर्फ, आपका काम shield damage करना है, phase out करो बाकी का काम टीम के ऊपर है. नहीं खेल पाए अच्छा टीम तो टीम को blame कर दो, कोई issue नहीं है. So that's why I love Wraith Pai. But I'd like to ask you the same question. What do you prefer the most in terms of legends? See, to be honest, I started with Wraith because obviously W player. I tried Wraith. I used it for some time. I got some knocks. I couldn't convert them into kills. The teams were some weird teams. Ranked और unranked में तो दोनों में कुछ तो weird teams आती हैं. तो उसी के चलते जो है कहीं ना कहीं मैं बहुत struggle करा. So then I thought कि अपने आप को बचाना है. तो I have to go a bit more passive. I chose the second agent, which was Bangalore. So that's my main now. I smoke off, go into some corner, heal up, and then fight again. So Wrath wala problem zarur hai. I can't get out there, but still I can go into some corner, heal myself up, and then fight again. So इतनी देर में वो ढूंढ रहे हमें, and you get the point. Oh, exactly. But I फिर you'll hate blood out. स्कैन अगर आपको हो जाए तो आपको काफी दिक्कत होगा. It's a love and hate relationship. It's a love and hate relationship. Exactly. And I'd love to see some plays like this happen. I mean, I'm a huge fan of Bloodhound as a legend itself. Although as a legend वो उतना ज़्यादा टीम को वैल्यू नहीं देता जितना उनके सब्स्टिट्यूट्स I usually see a Valkyrie being played instead of a Bloodhound. And I get the point. रोटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो पर्टिकुलर एजेंट. आपको डैमेज देना है, वापस बाहर निकलना है बहुत तेज़ी से. It helps you a lot. But as a single legend, I really love Bloodhound. I mean, those scans are just insane, especially in the final zone. A Beast of Hunt activate करो, हर 5 सेकंड scan है आपके पास. So that is something that gives you great value in terms of information. But then again, अगर मेरे जैसा एम किसी का अच्छा नहीं है तो मत यूज करना. It won't help you a lot because प्लेयर को देख के भी नॉक नहीं कर पाए तो it won't help you a lot. Rather than that, use something that can support your team, right? But yes, talking about the game, बहुत ही कम Bloodhound भी देखने को मिला था, right? I guess 1 or 2 Bloodhounds and that was about it. Majorly what we saw was Seer. Seer एक ऐसा लेजेंड था जो ऑलमोस्ट हर एक टीम के पास था. हाँ, सीयर का मेटा जब से आया है तो इट हैज चेंज्ड द गेम कंप्लीटली. इनफैक्ट आप बात करोगे एएलजीएस पे भी सीयर का बहुत वाइड स्केल यूज करा है, बहुत टीम्स ने यूज करा है और सबने बहुत अच्छे से भी यूज करा है. इनफैक्ट आपको अगर एक पूरे के पूरे कंपाउंड का एरिया आपके एक अल्टीमेट से मिल जा रहा है, एग्जैक्ट पोजीशंस, एग्जैक्ट प्लेयर्स की पोजीशन मिल जा रही है. सो व्हाट मोर डू यू नीड? यू हैव 4 प्लेयर्स और ऑलरेडी प्रोस, यू हैव गुड एम. सो व्हाट मोर डू यू नीड? यू हैव एवरीथिंग you wanted. So go in, kill them. You know the shield details as well. You know if they have a gold shield, purple shield. So अगर white दिख रही है तो rush in and finish them. It's as simple as that. Seer at that point ऐसे बहुत काम आता है. कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए ज्यादा अच्छा है. इनफैक्ट अकेले भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, बट कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स ज्यादा उसका जो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं. बट या गुड एजेंट ओवरऑल. Okay, let's see तो अगर यही consistent रहेगा, will we see the Seer very regularly throughout the 10 games or not? अभी सिर्फ गेम नंबर 1 हुआ है, so let's hold our expectations out a bit because अभी भी डे नंबर 1 खत्म होगा, तब थोड़ा सा मामला क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वो प्लेयर्स है, ये वो टीम्स है जिनको देखना है, ये वो लेजेंड्स है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. let's have a great game with them. But right now what we are waiting for is game number 2, guys. कॉल मिल चुका है. विल स्टार्ट वेरी वेरी सून. प्लेयर्स आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट जॉइंड इन एंड वी विल बी जंपिंग राइट इनटू द एक्शन. बट आईड लाइक टू गेट योर व्यूज एज वेल. ऑडियंस, आप लोग भी बताइए किस लेजेंड को आप खेलना और देखना दोनों प्रेफर करेंगे. कुड बी डिफरेंट, कुड बी सिमिलर, प्लस द टीम यू सपोर्ट.
I know there would be a lot of supporters for Team Predators and Team Dream Esports. I have seen these supporters in the past, so I hope we will see some supporters in the chat. Definitely spam the name of your teams you're supporting and hope for the best possible result, because in कुछ teams के लिए पहला game उतना अच्छा गया नहीं अभी तक. जी हाँ, कुछ टीम स्ट्रगल करती हुई जरूर से देखने को मिली, बट वी ऑल नो they'll perform. We all know they'll perform. You've seen them play multiple times. You know their gameplay. You know how they perform. एक आध बार ठीक है, sometimes people choke, sometimes things happen which you can't avoid. So let's just take that at face value and move on to the second match, and we'll see the OG performance from all the players and all the teams as well. और सबकी तरह synergy भी जो है हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग कहीं ना कहीं देखने को मिली थी. I guess वो अब शायद से वापस आ जाएगी, क्योंकि पिछले मैच में जैसे मैंने कहा गलतियां बहुत सारी हुई थी, सबकी तरफ से हुई थी, तो उस पर वर्क कर लेंगे तो बहुत आराम से इस मैच में सबकी टीम्स जो है बहुत स्मूथ तरीके से जो है ओवरऑल गेम प्ले आज जरूर से दिखा पाएगी. जल्दी मैच स्टार्ट हो तो इसी के साथ ओके बोलने की जरूरत थी. ओके that's fine. कैरेक्टर सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. मूविंग ऑन, इट्स गोना बी ड्रीम स्पोर्ट्स. ओमेगा कूड़ा गेटिंग द फर्स्ट पिक हियर. लोबा ले लिया जा चुका है. सियर अगेन वी कैन सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स पिकिंग अप सियर. जिब्राल्टर में देख सकता था, गिल की टीम में आ चुका है एक. वैल्करी एज वेल इज गोना कम इन फॉर देम. ब्लडआउट कमिंग इन फॉर ग्रूवी गोरिल्लास हियर. Okay, Caustic coming in for Hevan Gaming. Vector Esports going to take the Newcastle here. A good agent obviously plays a really important role as a tank character, and obviously इनकी abilities जो है, इनका जो ultimate है, जो shield लेकर bounce करते हैं दूसरे players के ऊपर, that's just very useful in an intense fight or an aggressive scenario जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके player knockdown पड़े हैं. And that revival shield as well provides you with a lot of health. तो revival भी complete हो सकता है और आप jump भी करके reposition कर सकते हैं. At the same time, मैप हमारे सामने आ चुका है. Fritz, what do you think about this specific drop? And is this the normal one or is it an unusual drop position? ड्रॉप तो आई डोंट थिंक सो वुड चेंज अ लॉट. अगेन एक ऐसा प्लेन पाथ है जहाँ पर ज्यादा टीम्स को दिक्कत नहीं होगी. थोड़ा सा और वेस्टर्न साइड पे होता तो शायद वो जो क्लाइमेटाइजर का एरिया जहाँ पर टीम जाना चाह रही है वो आउट ऑफ बाउंड्स हो सकता था, बट नॉट दिस टाइम. द प्लेन इज ग्रेट. आराम से टीम्स जो है वो यहाँ पर ड्रॉप करेंगे एंड दे विल फाइंड देमसेल्व्स अ गुड लूट. ऑल्दो पिछली बार से अगर आप कंपेयर करें तो इस बार हमें यहाँ पर टीम प्रेडेटर्स अकेले नजर आ रहे हैं. लास्ट टाइम दे फेस्ड अ ड्रॉप क्लैश जहाँ पर आराम से ऑन टॉप आए थे, तो नॉट श्योर किसके साथ हुआ था. आई गेस इट वाज DT7 में भी, जो अब फ्रैगमेंट के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं. अंदर में टीम हैवान नियर द लावा सिटी रीजन. We do also have LFT Genius, Omega Cards and Chicken Asian near Giza. Drop Clash is really not a threat right now to any of the teams, but shayad on the northern side we might see the team red and team blue fight it out. Yeah, Team Typhoon. Okay, Lava Typhoon as well seems like a place where we could see some early fights coming in, because Noxy की squad यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है. Begum as well might be closing in. यहाँ पे कहीं ना कहीं रोटेशन में गलती से क्या कहते हैं, ओवर कमिट ना करते और अपने आप को रिवील ना करावे. ये बेहतर रहेगा इनके लिए. और अगर रिवील हो जाते हैं तो इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो दे आर गोना प्लान ऑन रनिंग इनटू एनी अदर टीम्स एट दिस पॉइंट, because अभी तो लूट करने का ही टाइम है. And with that being thing, first zone has almost taken its shift as well. It's gonna be a northwestern shift here coming in towards countdown. एक अच्छी खासी जगह पे आ जाएगा. स्क्वाड्स को धीरे-धीरे रोटेट करना. मोर स्क्वाड्स यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रही है. सेंट्रलाइज पोजीशन पे कहीं ना कहीं अभी होल्ड कर रही है, लूट कर रही है, और उसी के साथ कुछ ही देर में जैसी लूट कंप्लीट हो जाएगी, when they'll have enough supplies to fight some teams, then we'll start to see some rotations here. Definitely Noob is gonna spot someone. The charge rifle is gonna come in handy here. थोड़ा सा damage, 36 HP जरा यहाँ पे लो करेंगे अपनी शील्ड से. It was a white shield, so obviously कहीं ना कहीं charge rifle here is gonna be really useful for them. Close in करते हुए अगर दो players को भी ढंग से इसके पूरे shots connect कर देते हैं, that's gonna provide them with a lot of opening points there. And उसी के बाद shield भी कहीं ना कहीं take down हो ही जाएगी. On the side it's gonna be Bamboozled here, struggling a bit. सामने की तरफ से दूसरी squad ने जो है यहाँ पे fire down करना शुरू कर दिया है. Trying to get the pick here. SMG के साथ long range fights लेते हुए car SMG that too. Havoc on the other hand in the hearts of PGG Fluid here. Let's see can he do something. एक जो है यहाँ पे बात करी जाए, एक box अभी भी pending है, but that's not gonna stop him. There we go. He's still gonna spray away his ammo. Rishi has been taken down. That is the first player down. Bamboozle थोड़ा सा मुश्किल में पड़े थे. Fluid I guess was on the verge of getting taken down, but बचे किसी तरीके से अपने लिए कवर ढूंढा, रीसेट करके वापस आया फाइट के अंदर, and he is strong. He gets the first frag for his team as well, and now let's see how the fight continues. Raze has been tagged quite a bit, has been taken down as well, but the support comes in. Noxy, great use of the PK, gets that frag for his team as well, and Bamboozled
That is the second nail in the coffin. The final is still remaining. I guess वो शायद survive करके आप position points के लिए खेले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. But otherwise, the early fights, Team Bamboozle coming out on top. What an aggressive performance and some brilliant picks as well coming in from them. Reds on the other hand trying to fight some people here. Damage thoda sa nikal bhi liya, even though they managed to take down some damage. I don't think so that's gonna be of much use here. Overall to kahin na kahin fall back hi karte hue dekhne ko mil raha hai. Bamboozled here, even though they did have a good start, struggling a bit at this point. Fluid has been picked off. Race trying to get away from there. Shiva has a charge rifle here. Okay, one guy already lost the shield. Red jo hai yahan pe damage points dikha rahe hain. That means it's still a very low. Sami taraf abhi bhi hame dekhne ko milega. He's gonna aggress. Let's see, can he get the pick here? Two players almost lost their shields, but still have some points left. एक player यहाँ पे रात अभी देखने को मिलेंगे. He's gonna try to escape out of there, but no. Loma's gonna outplay him. Very low. That brilliant jiggle, that brilliant save. But he did try to punch him. He did try to press him, but unfortunately पीछे की तरफ से जो है किल हल्का सा भी चोरी कर लेंगे. थोड़ा सा भी हम, but कोई नहीं. टीम में तो चलता ही रहता है. किल जो है अभी चोरी होता हुआ. With that, एक अच्छा खासा kill. Bamboozle on the other side is gonna lose Fluid completely. They need to recover the banner, and then they need to think about respawning their player as well. Raze has the Loba here. निकलेंगे यहाँ से थोड़ा better position की तरफ. Hopefully he will not run into anyone. On the other side is gonna be Dreaming Sport struggling a bit. Loba is barely alive. That caustic strap is not making it easier for her to get revived. On the side, Relentless Esports has only 2 players in this match, so I guess कहीं ना कहीं starting में man disadvantage के साथ खेल रहे हैं. It's gonna be a struggle, so they'll try not to fight much in this match per se. Harshik on the side as well is gonna play a bit safe. I guess accident हो चुकी है. Blue and purple shields as well gonna be spotted on them. Dreamy Sports, okay. Revival is gonna come in. Still going strong. Still not down yet. On the other side, यहाँ पे Shiganishis की बात करी जाए तो आ चुकी है यहाँ पे blue shield. Or on the side, Bamboozle is struggling a lot. Fluid's respawn has been timed out here. Razor as well did try to recover the banner. Unfortunately, didn't make it out of that position alive. Inka banner ab lena Noxy ko. Struggle is a bit too much for them. Revival क्या complete कर पाएंगे? क्या यहाँ पे respawn हो पाएगा इनका? That's the mystery. Bamboozle early fight जिस टीम से ली थी उन्हीं के एक प्लेयर ने वापस आके पहले फ्लूइड को टेक डाउन किया है. सेकंड आई गेस इज फ्रॉम अ डिफरेंट टीम, बट ओवरऑल आई एम नॉट श्योर टीम Bamboozle गए क्यों नहीं उस फाइट के लिए. They could have easily taken down the remaining player. They decided not to, and now they're paying the price. 2 players out of the game. One could be respawned back, but then again loot की बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है since the zones have started to close in. Zones धीमे-धीमे close in हो रहे हैं, and the teams they will not really allow the opponents to get better loot once they see the revival plane in the sky. Meanwhile, Tarun Gill shots उतने बेहतर यहाँ पर लैंड करवा नहीं पाए. Fat Monster टाइम से यहाँ पर अपनी डोप शील्ड जो है डिप्लॉय करी है. नाउ नीड्स टू रीसेट. सो डज दिस टीम. वरुण स्लिम शेडी भी काफी ज्यादा लो ऑन एचपी पे दिख रहे हैं. एंड हियर कम्स द यूटिलिटी बॉम्बार्डमेंट एज वेल. Opponents, they're looking to take this fight. Relentless Esports, Calyx is down on the ground. It is all down to Cairo to help his team achieve some points. Yes, it's gonna be up to Blast standing. Hey, yeah, full charge. He has a wingman here as well. It is possible he could clutch the situation out, but it's gonna be difficult here, given the fact that he's gonna be the last person standing on the side. Dreaming Sport got out of that specific spot here. Abhi bhi struggle kar rahe hain. They're still not out of the danger yet. Fight abhi tak khatam nahi kari hai. Cairo is gonna focus on reviving his player. He's gonna focus on getting that beacon, getting that banner to the beacon here. And Shiganishis is going to use his ultimate as well. Valkyrie being used. Valkyrie at its peak हम देख सकते हैं यहाँ पे rotations के लिए usually जानी जाती है और इनका ultimate भी इसी प्रकार यूज करा जाता है. इस मैच में देखने को मिल सकता है. जा रहे हैं बट किधर जा रहे हैं exactly वो नहीं पता है. Let's see किधर जाते हैं. जिधर भी जाते हैं hopefully कोई fight इन्हें ना मिले, क्योंकि ड्रॉप करने के साथ ही अगर फाइट मिल जाएगी तो it's gonna be difficult for them because they wouldn't have thought that through. On the side, यहाँ पे बात करी जाए तरुण गिल की टीम की, इस मैच भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस अभी तक हमें देखने को मिल नहीं रहा है. एग्रेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग एज वेल. आई गेस इट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ, इन फैक्ट ड्यू टू लेस यूटिलिटी दे हैव इन दिस मैच. शील्ड्स जो हैं अभी भी मेरे को नहीं लगता खास मिले होंगे. वीगो जिम की टीम, they've gotten some damage here. I don't think so they managed to get some kills, but going strong in this match as well, trying to go a bit slow with that. धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश. ग्रूवी गोरिल्लास, तो इन्होंने भी एक आध प्लेयर को स्पॉट करा था, थोड़ा सा डैमेज पड़ा. So that turned into some sort of a fight there. Definitely Noob is gonna get some damage here. Has an R301 here.
is going to be a very useful gun in the close range fights here as well. And the Bloodhound getting used, and इसका पूरा फायदा जो है यहाँ पे लेते हुए तीनों के तीनों प्लेयर स्पॉट हो चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे, धीरे-धीरे क्लोज इन करने की कोशिश. There are 2 entries to this exact that's gonna be stairs and the zip line as well. Let's see किधर से घुसने वाले हैं, जिधर से भी घुसे इस टाइम पे मेरे को लगता है वेक्टर स्पोर्ट्स के पास कहीं ना कहीं बेटर एडवांटेज है, एक बेटर पोजीशन है, and they could play out the situation very easily for them. Newcastle भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, but a caustic in front of them is making things difficult for them as well. They can't push in, they can't get some damage in, their visibility is less at the moment. Even the Bloodhound is gonna be useful, but kahin na kahin wo scan जैसे expire करता है, they are in the blind completely. Bunga time fight damage यहाँ पे हो रहा है. Okay, some brilliant tap fires coming in from that R301. Could have used DMR instead, but ठीक है R301 का भी यहाँ पे multi-purpose use जो है करा जा रहा है और बहुत शानदार तरीके से करा जा रहा है. This is the disadvantage when you're trying to hold the roof of a compound. आप थर्ड पार्टी हो सकते हो. उंगा बुंगा कोशिश थी, पर उंगा बुंगा की टीम खुद ही थर्ड पार्टी हो रही है. That is the reason जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा फाइट से डिसएंगेज किया गया. बट अब ये 4 राइफल इन प्लेयर्स के ऊपर बहुत वैल्यू निकाल सकती है. नॉट श्योर why did Beckham just jumped out. I guess सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपनी टीम को. That is the only reason that I can think of right now, because सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में थे पाए, and it could have really dealt some great damage. जी यहाँ पे डैमेज तो बहुत सारा निकाल सकते थे, बट कहीं ना कहीं वो मिस हो गया थोड़ा सा, पर यहाँ पे डैमेज नहीं आ पाएगा. और अब जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रीफर्स की स्क्वाड जो है रोटेट करने की कोशिश करेगी. पूरा यहाँ पे जंप टावर का यूज तो कर लिया है. लेट्स सी वेयर दे रोटेट, और जिधर भी जा रहे हैं यहाँ पे आसपास आई डोंट सी एनी मोर टीम्स इन प्रॉक्सिमिटी हियर, सो इट्स गोना बी स्मूथ सेलिंग फॉर देम. कहीं ना कहीं जोन के बीच की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे. माइट एनकाउंटर सम प्लेयर्स. ग्रीफर स्टिल ट्राइंग टू गेट सम डैमेज इन. 2 finishes already coming in for space. Insane here. Has that 30-30 repeater and an R301. A decent combination here, a decent loadout as well. Long range 30-30 बहुत crazy है. टाइम अगर आप headshot connect करते हो तो obviously बहुत ज़्यादा अच्छी गन बन जाती है. Definitely Noob is gonna get yet another frag here. 2 finishes for them as well. Vector Esports, even though they were struggling at one point, but now they are not. They made a comeback. They're getting some brilliant picks in this match, and with that, it's a brilliant shot for them as well. अभी बात करी जाए तो 14 squad still alive, 41 players still standing. Damage यहाँ पे इस game के बाद आता हुआ और damage आ रहा है. He's just stacking up those numbers here. Very low. Almost shield down है. 1 HP रहेगा यहाँ पे shield पे. Gonna push in, he's gonna close in. He knows this is the best opportunity for him to close in at this point. इसकी सब की तरफ से धीरे-धीरे support भी आता हुआ, but still the zone is right in front of them, so they have to capitalize on that, and hopefully they get the squad wipe as well. Let's see. They have been able to spot just one, so they really need to be very aware कि बाकी players किस तरफ हो सकते हैं. Meanwhile, Varun Slim Shady gets a pick onto DT7 Rajan. Team DT7 getting into the battle with Team Tarun Gill. इंटरेस्टिंग फाइट रह सकती है. लैव टू जंप टू दैट, बट राइट नाउ टीम ड्रीम esports जो थोड़ी देर पहले तक बहुत मुश्किल में थे, अभी एक स्टेबल स्पॉट पे आ चुके हैं. बट ग्रीफर्स, they're definitely griefing their opponents. One of them has been completely taken down. Scorpion out of the game. Mikito को यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया गया है in terms of shield. But Team Griefers, the support comes in and they've been able to wipe a squad. Migo Jim on the other hand, Scorpion has been taken down. Raza बहुत ज़्यादा heavy fire अपने ऊपर लेते हुए, and even the Wraith is not in a very healthy position. Raza needs to reset. So does Shreeze. He's able to get the heal in. Even Raza will be able to do so. But let's see if they're ready for the fight, if they're ready for the revival as well. Griefers, all of them up with purples. Let's see if they're able to win the fight or not. It's going to be difficult for them, but obviously they have better position here, better utility as well. और जहाँ तक बात करी जाए इस सीजन का स्पेसिफिक बेनिफिट तो नहीं, यहाँ पे डिसएडवांटेज में कहना चाहूंगा. अगर यही पिछले सीजन की बात होती तो दैट गोल्डन शील्ड वुड हैव बीन एबल टू सेल्फ इटसेल्फ. तो इतनी देर में रेजरेक्शन खुद ही अपने आप को दे दिया होता और इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, और ये फाइट में अपने आप को भी बहुत जल्दी ला सकते थे. बट अब जो है कहीं ना कहीं देखो बफ जो है हटा दिया है पूरा का पूरा. यहाँ पे गोल्डन शील्ड का हो चुकी है कंप्लीटली, और बिल्कुल भी जो फायदा नहीं था खास. इवन तो डैमेज नहीं लिया. यहाँ पे बात करी जाए दूसरी तरफ, इट्स गोना बी हार्ड स्टक हियर गेटिंग डैमेज. कोशिश यहाँ पे रहेगी, बट डैमेज हाथ नहीं निकाल पाएंगे. रनबी कॉर्नर हियर, इतना साला स्टैंडिंग हाथ car in his hand. R301 as well, but I don't know why he's using that car. I would have preferred the R301 personally. Use करेंगे इसके साथ Bloodhound.
डैमेज यहाँ पे अच्छा खासा निकालते हुए the person is already down to red HP, बहुत low है, we goes him, even though they were struggling a bit in the beginning here, but now they did come back, they got the kills, they got the damage as well, and they beautifully executed that fight finish as well for them. Back here on the other side, it's gonna be hard stuck here, 734 damage coming in for Watson here. Okay, and a Peacekeeper have a Peacekeeper और Longbow की जहाँ तक बात करी है, that's an unusual combination, even though आप बात करें Longbow long range के लिए better gun है, for close range Peacekeeper is good enough, but still in mid range what would you do? Pick him, absolutely wrecking the shield in front of him, और यहाँ पे चार राइफल का पूरा फायदा लेते हुए लॉन्ग रेंज में तो डोमिनेट करना ही था। आज स्टॉक D4 सामने ओपोनेंट्स आ रहे हैं, सामने 3 प्लेयर्स आई गेस उन्होंने स्पॉट किए हैं यहाँ पर। But let's see if he's able to really get into the fight or not. He's ready with the heartbeat. He's trying to get any information that he can right now. ज़्यादा मिलेगी नहीं। Griefers की बात करिए तो Mikito has been able to upgrade himself to the red shield as well. That's the maximum you can get. That's literally the maximum you can get. And in terms of zone, Griefers they have a great position. बहुत आराम से zone के अंदर बैठे हुए इस समय. And they just need to snipe players. अपनी shields upgrade करिए, damage deal करके. That should be the first thing that they do. Meanwhile, Vigo Jim, Scorpion will reset himself, has to reset himself. And let's see then how do they re-engage into the fight against their opponents. Managed to get some kills here, but अभी भी जो है मेरे को लग रहा है पूरी squad सामने वाली eliminate नहीं हुई है, but encountered another squad here. Face insane, trying to get some shots here, but unfortunately, it's gonna get spotted himself. The third party आता है वो boom check here in the hand of Loom. That to the red one drops से यहाँ पे निकाल ली है. Let's see, is it gonna be a good decision for him to take the bull check here? He's gonna manage to get some of the damage here. Raza's shield is gonna get fully healed as well. सामने की तरफ से लिए की ability में एक player सीधा jump करता हुआ, he's gonna get himself a reveal. Even though he did try to push it, but जैसे वो reveal आया, वो push वहाँ पे उसे पता था कि अब खत्म करने का time आ गया है. The players in front of him exactly know the position of the player holding. इसी के साथ दोनों की दोनों teams still panicking a bit, but still holding their calm. Let's see which team is gonna play out this situation better. Raza has a golden shield here, and two of the other players in his team have the purple shield, so the same Evo at the time, but obviously the golden shield is gonna be useful more. White Death has also managed to get the red shield here. Damage जहाँ तक बात करी है तो almost 1000 के करीब पहुँच चुके हैं. हाथों में longbow है. इसके पर topic talking about यहाँ पे निकलने का जैसे ही vertical से बचा, जैसे ही यहाँ पे Valkyrie की ability pop करी, he got shot down. Could have been completely finished off as well, but सही टाइम के बाद से bail out कर जाएंगे. White Death trying to get some damage here. Longbow unfortunately not that useful, but still he's gonna try to get some more damage. Working use that caused 6 trap. That was sneaky. Nobody thought that would happen. यहाँ पे जाने ही वाले थे, but Caustic के ट्रैप ने स्लो कर दिया और उसी के चलते जो है Stone ने अपना काम करके उनको भी पिक ऑफ कर दिया. That's only because वो ultimate नहीं use कर पाए थे. वो Valkyrie ultimate as soon as they tried to get into the sky, they just got shot down. That's unfortunate. That's just unfortunate. Meanwhile, Griefers अच्छा खासा डैमेज ले रहे हैं. The only thing I'm concerned about is बेगम. Insane की शील्ड ले लीजिए, उसको भी रेड अपग्रेड कर दीजिए जिस तरीके से आप शॉट हिट कर रहे हैं. And that would be really helpful right now. But meanwhile, the bow check coming in once again. इस रेंज पे शॉट्स कनेक्ट करना आसान रहेगा नहीं बिल्कुल भी. So let's see though if he's able to hit some insane shots or not. Hashtag D4 for now they are in a very good position. Griefers की बात करी जाए तो वो भी लगातार डैमेज चिप करे. बेगम please I'd love to see 3 red shields in your hand, but I guess teammate की तरफ से कुछ शॉट्स कनेक्ट हुए थे. Chiganation on the other hand, टीम हैवान को मुश्किलों में डाल रहे हैं. 2 प्लेयर्स को नॉक कर दिया गया है. The missiles being used as well won't really matter a lot. The generator is available. Zone के अंदर आपको next जाना है. Let's see अब रोटेशन किस तरीके से किए जाते हैं, because अब अगर आप Valkyrie ultimate का इस्तेमाल करना चाहेंगे, you will for sure be shot in the sky and you don't have the Gibraltar to reset quickly if you do land on a roof. Obviously they don't have a Gibraltar, that's gonna be an issue here. तो कहीं ना कहीं अल्ट यूज करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा. On the other hand, यहाँ पे सीर की ability का यूज कर लिया जा चुका है. That ult, as I told you, is really useful in situations like these. एक ही जब building में दो teams hold कर रही हैं, at that time if you pop that ability, you can spot exactly यार. यहाँ पे spot हो भी चुके हैं. On the side is gonna be Tarun Gill's team. You're trying to get some damage, absolutely wrecking the team in front of them. 2 players को almost down कर दिया जा चुका है. He's gonna get one more finish. Last person standing. Where exactly is he? Diamond निकालने की कोशिश, and it's gonna be Fat Monster. What the with his master here.
getting one more squad by Forest team. 3 finishes, all coming in Forest favor. 1100 damage, absolutely destroying all the teams in front of them. 6 squads alive, 15 teams still surviving. It's a very, very close situation from all the teams. But Tarun Gill finally showing their true colors. The aggression that we were eagerly waiting for is now in front of us. Another player dropped. Another player dropped in front of their eyes and just look at this. Push करने के लिए बिल्कुल तैयार है. Vigo Jim उनके लिए भी यहाँ पर एक टीम फाइट है. Although in 2 different compounds, but they're ready to take it. Shots team Vigo Jim जरूर यहाँ पर करेक्ट किए थे राजाने and he's still going to spray randomly through the smoke. RNT Fat Monster is coming up huge, but he gets taken down. Team Taru Gale, they have to get that reset for themselves first because Varun Slim Shady bhi bahut zyada low. He goes down. Just Anirudh, the last man standing, needs to get that battery down very, very soon. But the Valkyrie is not making it easy. Mikito Bloom coming out with a 1v3. पूरी की पूरी टीम तरुण गेल एक ही प्लेयर की तरह से टेक डाउन कर दी गई है. या हम क्या देख रहे हैं ये बाप रे बाप एक टीम को पूरा एक प्लेयर ने that is something that is really wild here. Absolutely brilliant performance coming in for him. In fact damage भी अच्छा खासा हो चुका और जहाँ तक आपकी रेड शील्ड की बात थी I guess वो कहीं ना कहीं सच हो चुकी होगी. तीनों की तीनों प्लेयर्स को रेड शील्ड मिल चुकी होगी. Vigo Jim on the side, they're still trying to get this position. Zone के अंदर जाना है. सामने ही एक wall है which is gonna be कहीं ना कहीं blocking their entry और यहाँ पे कवर भी बन चुका है ये साथ ही साथ but still इनको रोटेट भी करना है. रोटेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे बात करी जाए. चिकन इशियस के पास अभी भी एक रेड शील्ड नहीं है. The other 2 players still have their red shields. Zone is almost at its end. Moments here. It's down to the last zone. here बात करी जाए बहुत छोटा zone होता जा रहा है. 4 squads still surviving. 10 players alive. That sheer ability could have got Warlord here. Just a bit more precise यहाँ पे damage निकालने की कोशिश. Scorpion is gonna manage a lot of good damage here. यहाँ पे रज़ा की शील्ड एक has a flat line in his hand. R31 as well coming in massive here. Brilliant damage. Cross sick के traps को तोड़ना है कहीं ना कहीं important बन जाता है क्योंकि नहीं कोई visibility नहीं है इनके पास. Short खिलाता हुआ Space is gonna take one more player down. He's gonna spot one more. Shield has been broken down. The Dark Sheriff is not gonna make it easier for him. He's gonna get stunned here. Zone is gonna come in as well. A grenade as well coming in. It's just going crazy here. Space insane. Beckham absolutely obliterating the squad in front of them, getting damage left and right. Same situation goes for 3v Sports. Has left. He has lost his shield. Trying to get more damage. Space insane. Lost his shield. Very low. Squads left. Arc Stars. That's they grieved it. They performed according to their name. They threw so many arc stars on so many different teams. At the end 3v3 था Dream Esports के साथ. Now I agree that Dream Esports did not have the perfect utility to play in that particular area in that particular game, but जिस तरीके से अपनी utility use करी है वो arc stars वो चिपक के जो damage दिया है, the shields they just got demolished instantly in a second. Griefers the way they played. Mikito 1v3 in Tarun Gill just like that. I agree there would be some utility, some damage coming in from his teammate as well, but still composing yourself in such a way जहाँ पर आप इस तरीके से fight निकाल लो, that was just insane and Griefers had a great gameplay. Given the fact Griefers were struggling in that specific fight with Tarun Gill, they had all the shields down, they had most of the damage down as well for them, but even after that, Mikito somehow did the unthinkable here, got the 1v3 clutch, that too, on one of the leading champions of ROG Showdown series here. But that's what makes this tournament more fun. Every time we get to see new faces coming up, new players with some absolutely crazy performances as well. With that being said, an absolutely brilliant second game. A better game that too from the first one जो हमने देखा कहीं ना कहीं सारी teams better perform जरूर से करती हुई देखने को मिली. They learned from their mistakes, they made some new ones in this match, but with that the mistakes were in general less और zone भी at the end हमें बहुत अच्छा देखने को मिला. एक अच्छे खासे compound पे था, वहाँ पे cover थे सबके players के लिए, but even after that कभी ना कभी end में तो zone open में आना ही था. And after that सारी teams जो है, in fact जो first position निकाला उन्होंने तो बहुत ज़्यादा crazy performance दिखाया. Mikito, no doubt, the Griefers absolutely crazy performance. Now we'll be throwing things off to a very short break, guys. Break के उस पर match number 2 की standings and then game number 3.
With that, welcome back to the ROG Showdown series powered by Intel. This is gonna be the grand final match number 3 of the day. आज के दो बहुत शानदार बहुत क्रेजी मैचेस हमने ऑलरेडी विटनेस कर लिए हैं. Yes. We are yet to witness 3 more matches for the day, but जो भी होगा मजेदार ही होगा. हमने हर मैच में देखा है कि पहले से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स and the teams as well. This is going to be the third match. Players are obviously getting used to the play styles of other teams and other synergy as well. Rotation समझ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं performance भी दिख रहा है, गेम प्ले दिख रहा है, साथ ही साथ domination भी teams को दिख रहा है. But बात करो आप map wise scoreboard की, तो after the second match, in fact the scoreboard for the second match is going to be as follows. Griefers, they won it out. They won it out and they played brilliantly. And वो चीज दर्शा रही है in terms of kill points. 17 फ्रैग्स निकाले पूरे गेम से एंड अकेली ऐसी टीम है जिन्होंने आई गेस 4 से ज्यादा फ्रैग निकाले. अकेली ऐसी टीम है जिन्होंने 4 से ऊपर फ्रैग्स निकाले हैं. 17 that too. Griefers, they played brilliantly. They just played brilliantly and total 29 points to their name.
ड्रीम स्पोर्ट्स की अगर आप बात करें सेकंड फिनिश किया एंड ऑब्वियसली द वे ग्रीफर्स प्लेड दे वर नॉट हैविंग इट, दे वर नॉट लेटिंग टीम ड्रीम स्पोर्ट्स हैव द चैंपियनशिप टू देमसेल्व्स एंड 16 पॉइंट्स का अंतर है। वीगो जिम ड्रीम स्पोर्ट्स के नंबर आप मिला दीजिए तब भी ग्रीफर्स इतने नहीं बैठ रहे। That was a great game coming in for Team Griefers. But then again, I'd like to say Vigo Gym की तरफ से भी बहुत अच्छा गेम आया। Vigo Gym I thought कि कहीं ना कहीं fall flat कर सकते हैं गेम नंबर 2 के अंदर, but that's not the case. 11 points is a decent thing. Anything upwards towards 10 is a good game for a team जिन्होंने अपने लिए एक ना एक एटलीस्ट चैंपियनशिप गेम निकाल लिया है। So even for Team Vigo Gym that was a good game. उसके फॉलो अप अगर आप करें, उसके बाद अगर आप फॉलो अप करें हार्ट स्टक 6, हैवान 6, बैम्बूजल 5, this is not usually what we usually see in the top 5. Top 5 is usually double digit score lines, but that's not the case only because griefers griefed each and every time in the whole game. Obviously for sure they were grieving continuously and obviously पिछले मैच में उनकी तरफ से कंसिस्टेंसी देखने मिली, जिसकी बात आप एग्जैक्टली कर रहे थे। होपफुली इस मैच में भी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करेंगे। पिछले मैच में एक बहुत मैसिव किल गेम इन्होंने निकाला है, बट जहां तक बात करूं अभी तक की ओवरऑल स्कोरबोर्ड की, तो सेकंड पोजीशन पे कहीं ना कहीं हमें वीगो जिम बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ग्रीफर्स इवन दो दे डिडंट मैनेज टू गेट एनी पॉइंट्स लास्ट मैच, इवन आफ्टर दैट दे विल बी स्टिल एट द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड, बट वीगो जिम very close to them with just a gap of 5 to 6 points there. 26 points के अराउंड जो है इनका कुछ रहेगा वीगो जिम का। ऑन द अदर साइड हमारे को 27-28 पॉइंट्स के साथ देखने को मिले थे हमारे ग्रीफर्स एज वेल। दिस इज गोना बी द मैच, टाई ब्रेकर फॉर देम एज वेल एंड फॉर द अदर टीम्स obviously one more opportunity to shine and to show what they're made of. With that, the same agent selections is gonna come in. World's Edge फिर से is gonna be the map again. Let's see इस मैच में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है और क्या प्ले स्टाइल्स हमें कहीं ना कहीं वेरी करते हुए पिछले 2 मैचेस से अब देखने को मिलेंगे। Oh, the game has begun. Ringmasters अभी तक उतना अच्छा गेम आया नहीं है। Escarade Twitch. I hope they're streaming on Twitch ताकि उनका POV बाद में देख के पता चले कहाँ दिक्कत आ रही थी। But till now this team hasn't been able to perform a lot. A different plane path orientation this time. Start wire from the western part of the map is start wire on the eastern part of the map and is going all the way towards the western side. And let's see how do they really want to play this particular game out. Drop clashes is something I'd still like to see. पिछले गेम में सिर्फ 2 ही देखने को मिले थे। I'm not sure why, but that was really the case. सिर्फ 2 ही drop clashes देखने को मिले थे। I'd like to see some more. थोड़े drop clashes और होंगे तो देखने में और भी ज़्यादा मजा आएगा पाए। जी हाँ, मजा तो नो डाउट ज्यादा आने ही वाला है अगर हमें ज्यादा टॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगे, बट अगर ड्रॉप क्लैशेस बाय एनी चांस इस बार ज्यादा होते हैं तो दिक्कत इस स्क्वाड्स को जरूर फेस करने वाले हैं, क्योंकि अगर फाइट्स होंगी तो हमें कहीं ना कहीं मैन लॉस होते हुए भी देखने को मिलेगा, मैन डाउन होते हुए देखने को मिलेगा, और उसी की वजह से जो मैन एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं इज गोना टेक बिग हिट। बट होपफुली मैन एडवांटेज अपना बरकरार रखे तो आगे जाने के लिए इनके लिए एक बेटर डिसीजन और बेटर एडवांटेज रहेगा। बट विद दैट बीइंग सेड, फर्स्ट जोन हैज ऑलरेडी टेकन इट्स शिफ्ट। पिछले मैच में आपने कहा था कि जो हमारा प्लेन पाथ है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेटाइजर की तरफ से नहीं जा रहा है और प्लेयर्स को जाने में वहाँ पे मुश्किल हो रही है। इस मैच में इट वाज टू नियर टू क्लाइमेटाइजर और बढ़ता हुआ Mega Kuda is gonna get it's gonna get yet another frag here. बहुत सारे players यहाँ पे eliminate होते हुए देखने को मिल रहे हैं, knockdown हो रहे हैं, Peacekeeper, Flatlines, Wingman सब use हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी fights at the same time. Let's see कहाँ पे exactly कौन सी team इस time पे drop clash ले रही है या थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं elimination की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। On the side is gonna be Faded Wizard, yet another safe start for them. I don't think so they're gonna indulge in any fight whatsoever. Tarun Gill on the side, I don't think so they have any players close. Okay, they didn't have any players close to them. और इसी के साथ बात करी जाए, Arcstrix is gonna find one person here. Faded Wizard is gonna spot another team. Okay, दिख नहीं रहे थे यहाँ पे, but आ चुका है Sonar इसी के साथ Bloodhound का. That's gonna make things a bit difficult for Faded Squad here because they have been completely revealed और तीनों के तीनों players मेरे को लगता है spot हो चुके हैं. With this push incoming, I guess सामने वाली टीम थोड़ा सा fall back करना चाहिए, कहीं ना कहीं backfoot पे खेलती हुई हमें जरूर देखने को मिलेगी. With that being said, Griefers, the last man's champion, last match's champions, will be also starting off with a safe and a slow start. Start जरूर slow है, but already those squads eliminate हो गए हैं यहाँ पर. So this is something I did not expect, but has happened right now. And let's see the teams किस तरीके से tackle out करती है. I guess one of them is Dream Esports, because I did see Chicken is on not the good side of the kill feed. So I guess team Dream Esports is also out of the game. We'll have to wait and watch. Groovy Gorillas अभी तक तो यहाँ पर ज़्यादा इनको हंगामा करते हुए देखा नहीं है. I hope so game number 3 changes that entirely.
We do see some decent loot in terms of first few phases. अच्छा खासा बैकपैक भी इनको मिल चुका है. वीगो जिम ये तो आराम से ड्रॉप करते हैं. अभी तक कंटेंशन मिला नहीं है ड्रॉप पे, सो दे आर सुपर हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर थिंग. आराम से अपने लिए लूट इकट्ठा करी जाएगी. Sneeze, he's also looking very good in terms of the utility that he has. And circle, as you said, has gone a bit towards another side. Epicenter के आसपास यहाँ पर circle बन रहा है, and maximum teams should not have a lot of trouble rotating inside. We might see the bottom south team yellow in color, not exactly remembering the name, as credited to a serial killer. इनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है rotate करने के लिए, because they have a team who might just stop their rotation coming in. But other than that, I think most of the teams should just be fine. In fact, near heirloom side as well, I saw two teams very close to each other. एक fight वहाँ पे देखने को मिल सकती है. That grenade, okay, that was some tricky damage coming in. अभी EXE is gonna lose his shield here. शिवा धीरे-धीरे fall back करने की कोशिश कर रहा है. Damage यहाँ पे बहुत दिया जा रहा है सामने की तरफ से. Purple shield जरूर उनके पास रहेगी, but I don't think so. That's gonna be useful. सामने इधर से knuckle cluster as well is gonna give significant damage to Shiva. His shields unfortunately not getting completely healed. बार-बार जो है कैसे damage आ रहा है, utility से आ रहा है, नहीं तो grenade से आ रहा है, हर चीज का यूज करा जा रहा है यहाँ पे. At this point, the team is trying to win this fight. थोड़ा सा slow खेलना पड़ेगा. पहले बहुत सख्त जरूरत है. Space Insane is gonna lose a shield. Instant battery pop up करेंगे यहाँ पे. Hopefully completely लगा भी लेते. Creepers yet another fight here. They've already managed to get some kills. यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे बात करें try हो रहा है. Ability का पूरा इस्तेमाल कर लिया. Let's see क्या यहाँ पे चलता है. Valkyrie finishing off the last person. Begum getting some brilliant damage with that car. और भी बहुत सारे finishes हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं, but the Creepers are going to prove themselves yet again with some brilliant frags coming in. In fact, I guess this might be the first squad they wiped out, first and the second squad at this point of time. तो दो teams से यहाँ पे already लड़ चुके हैं, तो बहुत aggressive performance. कहीं ना कहीं जो हम तरुण गिल से expect कर रहे थे, वो हमें इस match में Creepers की तरफ से देखने को मिल रहा है. That's not a bad thing. That's a really good thing that they're performing this nicely, this crazily, and in fact with a domination this good. Exactly, Griefers, the way that they're playing is very good. Heaven is the team जिनको अभी eliminate किया गया है Griefers की तरफ से. And still they're not really concerned about the ring. I guess उनको पता है rotation में इतनी दिक्कत आएगी नहीं, और आप damage ले सकते हो. Early few zones हैं, इतना ज़्यादा damage आपको होगा नहीं. You can really reset once you're able to get inside the zone. And meanwhile, Dream Esports, okay, they're not eliminated. They're still very much in the game. तीनों के तीनों players हैं, Lefty Genius, Omega Kada and Chignatius. And they have got themselves into a different position. Although Omega, he has spotted down an enemy. So let's see if they do decide to get into the battle or not. Ringmasters again off to a very slow start. दो players pick off हो गए, आखिरी player बचे हैं, and he hasn't shown any sort of interest in recovering the banner. Okay, nice recoil control there. अच्छा खासा डैमेज जरूर निकाल लेंगे. Unfortunately, दो प्लेयर्स को टैग जरूर करते हुए, but डैमेज ही यहाँ पे मिलेगा. शील्ड डाउन नहीं होती हुई और नॉक यहाँ पे निकालना मुश्किल ही था. इसी के साथ ब्लैक मार्क का ड्यूस कर लिया जा चुका लोबा की तरफ से, तो आई गेस दैट्स गोना हेल्प हिम समहाउ. इस थोड़े सप्लाईज में तो जरूर असिस्ट रहेगा, और ऊपर से एमो का तो पूरा का पूरा अवेलेबिलिटी रहेगी ही. विद दैट, वेक्टर ई-स्पोर्ट्स स्टिल प्लेइंग अ बिट सेफ हियर. फाइट अवॉइड ही कर रहे हैं कंप्लीटली, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे फाइट लेने की. आई गेस इनको अब थोड़ा सा डिफरेंट प्ले स्टाइल ट्राई करना चाहिए, गिवन द फैक्ट दैट पिछले दो मैचेस में भी हमें इनकी तरफ से इतना कुछ क्रेजी डोमिनेशन देखने को मिला. ना ही दे वर ट्राइंग टू गो फॉर दैट डोमिनेशन, दे weren't looking for that aggression as well. They were playing calmly and just trying to get a position maximum. Kills के लिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था उनका. थोड़ा सा प्ले स्टाइल चेंज करें, आई गेस दैट माइट बी यूजफुल फॉर देम, बट अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम इनके पास हमें देखने को मिल सकता है. ग्रीफर्स ऑन द साइड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ लाइफ. They're not gonna stop, they're not gonna wait. They'll kill every player in front of them. They'll find, they're gonna eliminate each and every team. और इसी के साथ बात करी जाए तो जोन भी धीरे धीरे श्रिंक होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है कुछ ही देर में. अच्छा खासा डैमेज इस टाइम पे ज़्यादा मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है. स्पेस इनसेन ने भी ज़्यादा डैमेज नहीं निकाला, which is unusual for them, because पिछले मैच में कुछ बहुत ज़्यादा 1000 से या 1500 से ऊपर का डैमेज जो है इनके एक प्लेयर ने निकाल लिया था, वो भी early in the match. That's true, but I guess इस बार एक slow start लिया है. अच्छा गेम किया पिछली बार, तो they tried to balance it out completely by making sure कि at least in terms of position अच्छी आ जाए, ताकि वो चीज़ पूरी तरीके से इनके लिए खत्म ना हो. But meanwhile, what just happened? Hard stuck D4. They've been taken down. Two of the players have been taken down. Gravity manipulator का इस्तेमाल किया गया. White Death is trying to get that knock and gets just an arrow down. One of the players has, I guess, दो players यहाँ पर knock किए गए.
He's going for the third one, but will be shut down. Varun Slim Shady comes out on top. Will be able to get the revival as well. Griefers meanwhile अपने opponents को rotate नहीं करने देना चाह रहे. They are trying to land some good shots. Won't be the case. बहुत ज़्यादा दूर और हवा में with the R301. It's not easy at all. It's not easy at all to do so. Noxy on the other hand with the flat line gets a pick or two. Hitigo. That's a good frag to find considering कि अभी भी 14 स्क्वाड्स बचे हुए हैं. हाँ, जहाँ तक बात करी जाए प्लेयर्स की, अभी भी एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्लेयर्स स्टिल सर्वाइव कर रहा है. 38 प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं. 14 स्क्वाड्स एज वेल. कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी टीम्स जो फाइट के बीचों बीच फंसी हुई है और जिंदा निकलना कहीं ना कहीं बनता जा रहा है. बट trying to give their best. TGT Fluid is unfortunately gonna deny that rotation. यहाँ पे जा रहे थे अपने आप को हील करने के लिए, बट काफी नहीं हो पाए थे, ऊपर रोटेट कर रहे थे. With that, TGT is gonna get yet another frag. We go Jim. पिछले मैच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए, but this match they're gonna come back, they're gonna give that comeback as well. They're gonna show what they're made of once again. Fluid securing one more frag for his team. 3 finishes and kill leader इसी के साथ बना दिया जाएगा Fluid को. Valkyrie यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल इस टाइम पे Valkyrie का करा जा रहा है. As an agent इतना aggressive ये नहीं है, but still he has somehow managed to do that and he's still pulling it off brilliantly. 14 टीम्स, 36 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स आल्सो एलिमिनेटेड हियर. एक प्लेयर अभी भी एक स्क्वाड का हमें कहीं ना कहीं जिंदा देखने को मिलेगा, बट ही हैज समहाउ मैनेज्ड टू कीप हिमसेल्फ अलाइव. अपनी टीम को रिस्पॉन्ड करने का यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी रहेगी, बट वी नीड टू डू इट. मीनवाइल ड्रीम स्पोर्ट्स हैज स्टार्टेड द रोटेशन. वाल्kyrie का अल्टी यहाँ पे पॉप अप करा जाएगा एंड दे आर नाउ रिपोजिशनिंग टू अ बेटर पोजीशन एंड बाय द कंपाउंड. लेट्स सी इफ दैट कंपाउंड इज गोना बी एज यूजफुल एज There's no team is what they think Team Dream Esports and they're right about it. But थोड़ी सी ही दूर पे यहाँ पर अपने opponents को उन्होंने spot किया जो शायद zone से struggle करके आ रहे हैं zone के अंदर, और are they already inside the zone? Not completely sure about this. But again, Genius with the caustic traps is making sure कि ये सारे corners जो है वो trap से भर दिए जाए, ताकि अगर कोई भी team इनके ऊपर pushing करने का decision लेती है उसको punish करने में इनकी तरफ से कामयाबी मिले. Omega Kuda does have the black market available and they really need it right now because Genius and himself they are not playing on the purple shields. उनके पास अभी भी blue shields है, तो अगर loot अच्छी हो जाती है तो बेहतर रह सकता है. Meanwhile, Raze, that's great damage and now needs 10 seconds to get himself back into the HP range to fight. Noxy के ऊपर भी बहुत ज़्यादा damage deal कर दिया कि he's all flesh, no shield right now. Fluid is the only one who can fight this one out. Raze shield जरूर लगा है and now he has been able to dish out some damage onto his opponents as well. But this zone is hurting. This zone is hurting a lot as well, and they really need to be careful about this. Bamboozle not looking in a very good spot right now. And with that is gonna come in. काफी नहीं रहेगा ये जब Noxy अब बात करी जाए बहुत ज़्यादा लो चुका है. Zone is gonna do its job. Fluid is going to go down as well. The kill leader getting knocked down. Raze is now going to only keep himself alive. I don't think so he's gonna take this fight any longer because अब इन्हें पता है fight लेंगे तो 1v3 situation में पड़ जाएंगे and वहाँ से इनका जिंदा निकलना is gonna be difficult to without any support. दूसरी टीम्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं zone की बात struggle करती हुई space and same GG is gonna heal up. बेगम की shields down हुई थी but Reapers did counter them very very nicely and बहुत अच्छा करा. इनफैक्ट 2 प्लेयर्स को डाउन भी कर दिया था. स्टिल डैमेज आ रहा है इनके सामने से. अभी भी जोन में जाना है. शील्ड बैटरी इज गोना बी पॉपिंग ऑफ हियर, बट काफी रहेगा. क्या मेडकिट्स इनके पास हैं? क्या जोन में जाने के लिए जो सिरिंजेस चाहिए इन्हें क्या उनके पास है? अगर होगा तो इनके लिए काफी आसानी रहेगी जोन में जाने के लिए, बट रास्ते में एक स्क्वाड है जो कि इनका रोटेशन कहीं ना कहीं ब्लॉक ऑफ करने का पूरा प्लान बना के बैठी है एंड इनको जोन के अंदर जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली है. And is it going to be Vector Esports? And it is definitely going to be Vector Esports doing the same thing as well. Could have shot him down, could have managed to take him down. That shot exactly where the first is going to whiff him. Space Insane अभी भी अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश. आ चुके हैं एक बेटर पोजीशन की तरफ. जोन के अंदर फाइनली घुसते हुए देखने को मिलेंगे. बेगम ने यहाँ पे दे दिया है मेडकिट अपने प्लेयर को. Vector Esports is the team that's in front of them. हाथों में है यहाँ पे सेंटिनल, बट स्टिल इसका खास फायदा नहीं उठा पाया जा रहा है. चार्ज भी नहीं करा शील्ड सेल से. If he would charge and hit a bullet, I guess ज़्यादा डैमेज यहाँ पे रहेगा और कहीं ना कहीं बेटर एडवांटेज वहाँ पे रहेगा. Bochek as well is gonna come in with Vector Esports. खास काम नहीं आने वाला है सभी के लिए, बट थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए जोन की तरफ बढ़ने की कोशिश साथ से. Vector Esports right now, they are the ones who not into battle or sorts. मतलब डायरेक्ट बैटल लेने का इनकी तरफ से डिसीजन नहीं लिया गया. But meanwhile, Party Momos, they need to really chime in. They really need to get going right now. And here comes a push. Here comes a push. The Valkyrie tried to fly up in the sky has been caught off as well. The generator
making sure Party Momos के जो shots वो accurately ना land करे. But now the EVA 8, the shotgun runs out of ammo. And his team runs out of players to play with. The whole team gets eliminated in the blink of an eye. But पीछे से Dream Esports third party करने के लिए आ चुका है. Dream Esports are looking to have a say in this battle, but Vector are like, nah, we got that fight, we're happy with that, and we'll instantly rotate out. Groovy Gorillas on the other hand, they're into this battle. एक player को यहाँ पर knock करने में कामयाब. Phoenix will be able to completely take him down. 75 hours. YT out of the server. That is gonna pop off his ability as well. यहाँ पे निकल तो चुकी है एक थोड़ी सेफ पोजीशन की तरफ, बट अभी भी दो प्लेयर्स बाकी है सामने वाली टीम के. एक को जरूर फिनिश ऑफ कर दिया इन्होंने. शील्ड्स भी इनके पास इतनी खास नहीं रही, सिर्फ ब्लू शील्ड्स हैं. That to the 300 वो अपडेट भी होने के भी चांसेस खास नहीं रहेंगे. They need to get some frags here. They need to get some better shields for any fights here. None is gonna pop his ultimate as well. Okay, 2 players spotted, 3 players spotted with that, just like that. All of them holding in the same position are gonna get completely bounced in. अब वहाँ से निकलना है, वहाँ से एक better position पे जानी है जहाँ से at least they have a chance to fight the team. Front of them अभी completely फंस चुके हैं. वहाँ पे एक grenade या एक knuckle cluster is gonna be more than enough for the squad to get eliminated. इसके साथ धीरे धीरे chase करने की कोशिश Reapers की तरफ से. They know this is their opportunity to get some frags for them. 2 players down हो चुके हैं. Let's see, can the last player do anything? Who is the last player going to be? I guess कहीं ना कहीं अपनी टीम को जिंदा रखने की जो है इनकी कोशिश रहेगी. अभी थोड़ी सी फाइट अवॉइड करेंगे और जोन की तरफ बढ़ते हुए. ड्रीम स्पोर्ट्स गेटिंग सम डैमेज हियर. एक अच्छा कंपाउंड और साथ ही साथ टॉसिक भी है. टॉसिक भी है इनके पास, जिसने पूरा का पूरा सेटअप अपना बना रखा है यहाँ पे. If anyone were to enter that position, he is gonna get completely sprayed with that caustic trap. Let's see the Griefers right now. They are in a good spot. I guess 4-5 frags is what they have, and they'll be looking to increase the number as well. Purple Shields all on the board for Team Dream Esports, so they're also looking to get any damage that they can. Sentinel जरूर है, but अभी तक उतनी accuracy देखने को मिली नहीं है यहाँ पर. Genius is able to land a shot out to Omega as soon as I say that. He's been able to get one step closer towards that red shield. But then again, जब तक ये ring closer नहीं होगा, जब तक ये circle closer नहीं होगा, I really don't think so. Dream Esports need to make a move. They are the ones who can just sit in. Begum on the other hand, Phoenix अकेले बचे थे, उनको पूरी तरीके से pick off करेंगे. And Griefers, they add another frag to their whole tally. Yes, the total is just keeps on increasing, and we saw in the last match the 17 kills was the last standard for them. Let's see इस match में क्या एक नया standard अपने लिए set करते हैं या इस बार थोड़े कम kills निकालेंगे. अभी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि कम kills पिछली बार से रहने वाले हैं. एक और स्क्वाड को फाइट करने की कोशिश से एक प्लेयर को स्पॉट भी कर लिया था, बट वो पहले ही फिनिश ऑफ होते हुए देखने को मिलेंगे. सीयर की एबिलिटी आती हुई, they know squads very close to them. They trying to ward them off, बट सामने वालों के पास थोड़ा सा लॉन्ग रेंज के लिए ज्यादा वेल इक्विप्ड है. आई गेस तो कहीं ना कहीं फायदा ज्यादा इनके पास रहेगा फाइट लेने का ये वाला. ओमेगा कूड़ा इज गोना ट्राई टू provide some damage, but I don't think so now those bullets are gonna connect here. Players पे पट कर दिया जाएगा. R301 is gonna spot up there, but unfortunately none of those bullets are gonna connect either. तो नहीं करने की कोशिश. सामने वाले players को बहुत सारा damage दे रहे हैं. Begum here is as usual popping off, and he's gonna get some brilliant damage here. के लिए तो I don't think so बैटरी लगानी चाहिए. मुकीता बूम ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए डैमेज अच्छा खासा आ गया है. He's gonna bail out from that. पीछे की तरफ से कवर भी एक प्लेयर का क्लोज इन डाउन ऑलमोस्ट करते हुए ऑलमोस्ट मैनेज कर ही लिया था. एक शील्ड डाउन कर रहे हैं और सामने वालों की पूरा का पूरा शील्ड खत्म हो जा रहा है. यहाँ पे सिर्फ एक एचपी बॉक्स डाउन हो रहा है. And it's just imagine the amount of damage they might be giving here. The corporate spot करा जाएगा. He's gonna lose his shield. He's gonna go down. Great. One more player going down. Car in his hand. Take it. Can he 1v1. Can he manage? Mojito 1 HP, 2 players spraying at him at the same time. Not gonna be able to get out there, but he did try. बहुत सारा damage निकाला था, but सामने वाली team was better than them, and they proved that. Not sure. 2v3 was a 2v3 in their favor, and then somehow that team blew it out. Mickey तो एकदम से 1v2 में फंसे थे. एकदम से not sure what just happened over there because relatively सारे players healthy थे. But somehow their opponents are able to, just eliminate them. Exactly. They just got eliminated. They just got destroyed. I'm not sure what was the reason. That was an insane fight. Meanwhile, Dream Esports अभी भी compound hold किया हुआ है. Circle उन्हीं के ऊपर लगातार form होता हुआ. Circle उन्हीं के ऊपर लगातार बनता हुआ. And they're happy to hold. They're super happy to hold. Meanwhile, Faded Wizards, they're throwing some stuff at that compound. But Dream Esports seems to have no problem whatsoever to sit inside of it. They've got a brilliant position. What else
do they need to do? One of the most important covers in this whole zone is under their control. अभी बस यहाँ पे hold करेंगे, एक अच्छा खासा position भी है, ऊपर से भी cover है, side से भी cover है. So at this point, no utility can damage them. They can hold that position for as long as they want, and Zone, as we can see, is obviously in their favor as well. Not okay, still in their favor, some sort of, I guess. But Kirija Faded Wizard on the side is on the next corner of the zone. यहाँ से down निकालने की कोशिश. Valkyrie is gonna use her ability. I don't think so it's gonna be of much use there. सामने तरफ caustic traps have been already deployed just so that the team in front of them don't see what's going on behind that. Definitely Noob's gonna get spotted. बहुत सारा damage. Completely out in the open. Can he get to the cover? He's gonna get to the cover, but I don't think that's gonna be enough. किसी तरफ से third party. Grenades are coming in, arc stars are coming in, and at the same time, Thermite as well is gonna make their job a bit more difficult. और साथ ही साथ दोनों तरफ से जो है damage वो लोग ले रहे हैं. Dreamy Sports knew their position would play a very vital role in this zone, and they've used it to perfection. And सारे के सारे kills damage जो चाहिए वो निकाल रहे हैं. He's gonna spot one more red shield यहाँ पे down करेंगे. Oh, no. Absolutely wrecking the shield. Chiganatius gets a double. Shiva is able to get the knock on to definitely Noob, and Chiganatius ने यहाँ पर Nexus अभी को पूरी तरीके से pick off किया है. It is the perfect opportunity to go in for the third party. Look at Faded Wizards. HP. Warwick is down. Arcstrix almost pick off over, and the missiles are perfect. The missiles are perfect right now. Arcstrix in a lot of trouble. Team Preds are trying to push in, but Dream Esports की तरफ से third party. Dream Esports now are the team who needs to be very, very careful. LP Warrior low, but has been able to get the knock. Instantly यहाँ पर phase out करेंगे to deny any more information or damage. And उनके teammates अभी अंशिवा super healthy. They are super healthy. अभी LFT Genius को पूरी तरीके से pick off करेंगे. Preds, they're resetting and they're just making sure that they're able to handle this game properly. And with that, abhi bhi damage. In fact, पूरी की पूरी squad को almost wipe out कर ही दिया. Last person squad करे जाएंगे और finish off a B in instantly. One more elimination is gonna come in. Shiva, abhi we know they're just aggressive, very aggressive. They won't stop for anything. Be that a player, be that a utility, they're not gonna stop. Massive in his hand. Chiganatius is trying his level best to get this 1v1 in his hand. The BB damage Kasim नहीं निकाल पा रहे हैं. 1v2 situation, and with that, Team Red is gonna get the champion for the third match of the day one of our grand final. Absolutely ridiculous performance from all the teams. Crazy gameplay. बहुत शानदार. Each and every team, absolutely astonishing gameplay. Oh, Dream Esports, they struggled in the very last fight. जैसे ही देखा Chiganatius थोड़ा सा अलग है, Team Predators ने जिस तरीके से pounce किया है. They find a solo player. Yes, there was a costume trap. I completely agree to that. But then it cannot stop three players when you're facing off against three players. It is really not enough. You either need to throw the gas grenade, जो कि I don't think so उनके पास उस समय था. But Team Predators was so quick to pounce upon that player. Isolate किया duel को. Not even a duel, it was a 3v1. Isolate किया उस player को, पूरी तरीके से चढ़े उसके ऊपर. डैमेज अच्छा खासा लिया था एलपी वॉरियर ने, बट इट वाज इनफ टू जस्ट टेक द शील्ड डाउन. तुरंत फेज आउट किया, तुरंत मेक श्योर किया कि वो ट्रेड ना हो, बिकॉज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एट दैट पॉइंट. एंड उसके बाद दे गेट द सेकंड प्लेयर एज वेल. Chiganatius left all alone in a 1v2, converted it into a 1v2 after getting the first knock. But after that he also knew upper ridge है opponent के पास, आपके पास एक master था. जैसे ही as soon as he ran out of ammo, he knew his game was over. He couldn't even swap to the next rifle because in a 2v1 a single rifle magazine cannot take down two different players. So exactly that's how it ends. Dream Esports, I really thought ये उनका game हो सकता था, but from behind comes in Team Predators. They get the perfect timings, they get the perfect reads, and are able to get the game for themselves. Unfortunately, that is exactly the thing we were looking for. कि कहीं ना कहीं Dream Esports के पास was, they had the perfect position, they had the perfect compound, they had the perfect cover. Everything was completely going in their favor. But end में zone as usual कभी साथ नहीं देता. It took a hard shift and somehow Preds got the hang of the zone. They used it completely to their advantage. 1v2 situation में भी अगर मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे वो मैच शिफ्ट ढंग से यूज करी जाती, थोड़े और बुलेट्स कनेक्ट हो सकते. That 1v2 could have been converted. He could have clutched that situation, but हम bullets थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, and abilities भी उनके साथ नहीं दे पाई जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था. But all in all, a good try, a 1v2 situation. That's the best we can expect from him. With that, Pred is gonna get the third match, and with that हम आते एक छोटे से short break के बाद. Till then, guys, enjoy the ads. हम लेकर आएंगे अपना चौथा मैच, Day 1 Grand Finals ROG Showdown Series का.
is ROG Showdown series. We are back with game number 4. By game number 3, again a very interesting game, and इस बार थोड़ा सा close गया. Although at the end there were some mistakes, Team Predators ने उस चीज का फायदा उठाया, but it was the closest it could have been for the past few games. नहीं तो लगातार one-sided matches last में कहीं ना कहीं बन के उभरे थे जहाँ पर teams knew what was happening and they were easily able to take the fight. This time though, an attempt was put in from Chignatius, although it was not enough, but still came a bit close. What are your thoughts on the game number 3? Game number 3 was absolutely a very good step up for all the teams after the first two matches. Teams weren't performing; they were getting very early eliminated very early, and कहीं ना कहीं वो उनके confidence को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं harm कर ही रहा था. तो इस match में team से थोड़ा focus करा कि in general we play the zones out. We'll fight obviously when we get the opportunity, when we think that this is the right time for them to fight. They took the fights as well. Some of the teams didn't probably convert them. Some got eliminated, some got a full squad wipe. तो इसी वजह से बहुत सारे हमें variations देखने को मिले. But obviously these teams did learn from the previous two match, and third match obviously is also going to be one of the good point for them to better their gameplay. Let's see if that happens or not. But in terms of position, in terms of points, if we talk about Team Predators, again a great game for them. 28 points for to their name. ड्रीम स्पोर्ट्स ने अच्छा फॉलो अप किया है, एक अच्छी वापसी है मैं कहूँगा ड्रीम स्पोर्ट्स की तरफ से. 16 पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं ग्रीफर्स. Once again their focus was all on the number of frags that they could get, and that's exactly where they thrive. 12 frags निकाले. पोजीशन पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ा, सिर्फ 3 मिले, बट ओवरऑल 15 पॉइंट्स के साथ पोडियम पे एटलीस्ट गेम नंबर 3 के अंदर फिनिश किया है. Followed by Faded, Wizards, Team Bamboozle, Tarun Gill, yet to see a good performance from this particular team. And अगर आप बात करें यहाँ पर जो पहले दो गेम के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया टीम वीगो जिम ने, इस गेम के अंदर 11th पे क्रैश आउट करी है. जी हाँ, इस मैच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीगो जिम की तरफ से परफॉर्मेंस कम देखने को मिला, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम एज सच. ओवरऑल स्कोर बोर्ड भी हमारे सामने इसी के साथ आ चुका है. ग्रीफर्स विद दैट इज गोना बी लीडिंग द स्कोर बोर्ड विद 53 टोटल पॉइंट्स एंड 33 किल्स इन द प्रीवियस 3 मैचेस. सो आई गेस अगर 10 किल्स का या बात करिए 11 किल्स का एवरेज लेके चले पर मैच, तो दैट्स आल्सो अ रियली गुड सिनेरियो फॉर देम. 20 रैंकिंग पॉइंट्स और अच्छा कहीं ना कहीं इनके लिए बन जाता. पिछले मैच में फर्स्ट पोजीशन नहीं निकाल पाए, रेड्स ने निकाला फर्स्ट पोजीशन, बट फॉर्चुनेटली सेकंड मैच में इनकी तरफ से एक फर्स्ट पोजीशन था, तो उसकी वजह से आप बात करो दैट रियली मेड अ वेरी ह्यूज डिफरेंस. रेड्स इवन दो दे डिडंट गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द लास्ट मैच, बट आई डोंट थिंक सो दैट वाज इनफ एज कंपेयर्ड टू द किल्स ग्रीफर्स secured in the second match. We go Jim on the third position with 36 points, 15 kill points as well. ड्रीम स्पोर्ट्स एज वेल, हमने कहीं ना कहीं इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमने सिर्फ पिछले गेम में देखा. उससे पहले वो कैसे तैसे करके आ रही थी टॉप 10 के अंदर, में दिख रही थी, इतने खास स्किल्स नहीं आ रहे थे, बट हाँ अब जो है यू कैन सी देम इन द टॉप 5 एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग फ्रॉम ड्रीम स्पोर्ट्स. दे हैव 2 more matches, they can still get to the top 3. In fact, they can manage to get to the first position as well if they were to perform consistently in both the matches after this. That's true. That's for sure true. And अगर आप बात करें तो पहली जो दो टीम्स हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर चुके हैं अभी तक पाए. Look at this. Creepers in terms of frags 33. Predators in terms of frags 31. And this is after 3 games. That means they're almost getting 10 frags every game. Almost getting 10 frags. More than that even. Because 31 divided by 3 gives 10.333. You know the math. But getting 10 frags a game is not easy at all. I mean, you're eliminating more than 3 squads at a time. That's just great frags coming in from both of these teams. Although we know Griefers ने पिछले ही 2 games के अंदर ये majority of points निकाले हैं अपने लिए, but still getting these points will definitely put you in a very good situation. And let's see if this does change in the match number 4. क्या match number 4 के अंदर Predators और Griefers को रोका जा सकता है किसी टीम की तरफ से? Let's jump right into action. Obviously all the teams have the potential to counter the other teams. थोड़ी टीम्स के पास जी हाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस है. They've played much more, they've gathered much more knowledge of the game, and they are overall भी कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल है ही उनकी टीम. सिनर्जी वाइज ले लो आप, गन पावर वाइज ले लो या एम वाइज ले लो, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस डज शो. इवन दो यू हैव टैलेंट इन योर टीम, दैट डज नॉट मैटर ऑलवेज. That's what we saw in the first match. कहीं ना कहीं तरुण गिल की टीम के पास हमें पता है कि उनके पास एक्सपीरियंस है,
टैलेंट भी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा चोक हुआ, इसी वजह से जो हमें पिछले 3 मैचेस में खास तरुण के लिए टीम की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा। किल्स इवन दो दे आर मैनेजिंग टू गेट, बट आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हो कि आप स्कोर बोर्ड पे टॉप 5 में हो या टॉप 3 में हो। इफ यू कांट मैनेज दैट, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ता है, आपको अपना कहीं ना कहीं प्ले स्टाइल को रीक्वेश्चन करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि इज दिस द राइट वे आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद। might have been the way that I was doing it till now, but अब कहीं ना कहीं चेंज करना है। With that zone एक बहुत अच्छा लेन पाथ एक अच्छा खासा बनता हुआ, अच्छे खासे कंपाउंड मिलेंगे, पहला फाइट होता हुआ। With that it is gonna be an elimination coming in for the team तरुण गिल। अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा खासा बोल दिया मैंने और एलिमिनेट हो गए, ऐसा लग रहा है मेरे को, बट ऐसा ना हो तो बेहतर है। तो दे डिड ट्राई देयर बेस्ट, वहां पे लूट कहीं ना कहीं बेटर उनके पास मिल गई थी। ड्रॉप पोजीशन, ड्रॉप का जो टाइमिंग था दूसरी टीम का वही बेटर था, इसी वजह से वहां पे कहीं ना कहीं जीतते हुए हमें वो फाइट देखेंगे। और तो पर्पल शील्ड था, इफ आई सॉ दैट करेक्टली, एक प्लेयर के पास पर्पल शील्ड था, बट हाथ में क्या गन था? आई गेस एक स्नाइपर थी इज व्हाट इन देयर हैंड। That's not the weapon you would want when you're trying to fight it out in a close range battle, that too very early on. Anyway, Team Tarun Gill struggling to find their momentum, and they have been eliminated very early on within seconds of game number 4. Now let's see though on the back of it बाकी teams किस तरीके से perform करती हैं। Team Bloodbath, they have got themselves good loot as well. उंगा पुंगा ये एक लौती ऐसी टीम है जो एक तो न्यूकैसल खिला रही है यहाँ पर पाए, एक ऐसी ही टीम है जहाँ पर सीयर भी है। सो यू हैव अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एजेंट कॉम्पोजिशन, सॉर्ट ऑफ लेजेंड कॉम्पोजिशन, बट इट हैजंट वर्कड टिल नाउ। I haven't seen them perform brilliantly or engaging into the fights till now, and I really like Team Unga Bunga to at least try and change that. फर्स्ट मैच में हमें तब भी थोड़ा सा इनकी तरफ मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखने को मिला था। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम देम इन द प्रीवियस मैचेस, बट पहले मैच में दे वर गिविंग देयर बेस्ट। They tried, they managed to get to the top 5, top 3. In fact, हमने कहीं ना कहीं एंड जोन्स पे उन्हें बहुत देखा था, कुछ अच्छे खासे किल्स भी उन्होंने निकाले थे। पिछले 2 मैच में थोड़ा सा वो स्ट्रैट काम नहीं आ पा रहा है उनका। इनफैक्ट एजेंट सेलेक्ट की जहां तक बात है यार, वो तो उनकी सिनर्जी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा मैटर करती है, और उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है एजेंट के साथ वो शायद उन एजेंट्स के साथ ज्यादा रहेगा, इसी वजह से वो खेला रहे हैं। माइट बी अ यूजफुल स्ट्रैट, could be a useful strat as well, but थोड़ा सा better execute करना पड़ेगा उन्हें overall, और अपना गेम स्टाइल भी थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, but I guess that's all they need। परफॉर्मेंस पे और कोई खास कमी नहीं है, because फर्स्ट मैच में हमने देखा जरूर था कि इनसे भी हम जरूर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हम फर्स्ट पोजीशन वाली टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किल गेम में कोई खास कमी नहीं रही थी, थोड़ा सा रीस्ट्रैटेजाइज करेंगे तो they'll be able to perform this match as well। दो शिफ्ट होता हुआ once again it's gonna come in towards epicenter here, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज शिफ्ट रहेगा, बट स्टिल इट्स गोना बी अ नॉर्दर्न शिफ्ट। बात करी जाए यहाँ पे फाइट्स, बहुत सारी टीम ले रही है, बहुत सारे किल्स आते हैं। एलपी वॉरियर यहाँ पे करने में बिजी रहेंगे। फैंटम ट्रूप ने अपना गैस ट्रैप पूरा डिप्लॉय करा हुआ है, वो ऑलरेडी यूज भी हो रहा है, बट कुछ प्लेयर पुश नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना बी एनी प्रॉब्लम देयर। For now though, Phantom Troop, a team playing again with two players, and look at this, सारी information है उनके opponents के पास, they exactly know where these 2 players are। The drop comes in, although the shots are good। Dream Esports also playing with just 2, so this could be a bit tricky। Ghost is live, चढ़ना जरूर चाह रहे ऊपर, बट अगेन एंड अगेन इन्फॉर्मेशन उनके ऊपर रिले करी जा रही है, इन्फॉर्मेशन उनके बारे में रिले करी जा रही है। So now let's see किस तरीके से यहाँ पर इस चीज से एडजस्ट करते हैं Phantom Troop। They're happy to give that information but stay in that particular compound, and these traps will make things even difficult for their opponents। But it's a very unique situation here। 2v2 सिनेरियो और दोनों की टीम में एक प्लेयर कम है, एलिमिनेट नहीं हुआ है, आया ही एक प्लेयर कम है, तो ये बड़ा सही है यहाँ पे कि दोनों की दोनों टीम्स ने ऐसा फाइट सेलेक्ट करा है कि अपना लाइक सेम फुटिंग पे जो है टीम्स फाइट कर ले। बाकी पूरे की पूरी यहाँ पे विजिबिलिटी दोनों टीम्स को एक दूसरे की है, बट जब भी जो है कहीं ना कहीं एग्रेशन हमें इतना नहीं देखने को मिल रहा है। पाथफाइंडर की शील्ड डाउन हो चुकी है, Ghost is live has the opening that he was looking for quite some time here। He's gonna try to chase him down, can he manage to get him down? यहाँ पे स्पॉट हो जाएंगे, he's gonna push in, Genius did manage to get a knock here, he's gonna grapple out of that position as well। जल्दी शील्ड लगानी है, Ghost is live is gonna focus on that revival first, and I guess Genius also should prefer that, बट पहले थोड़ा अपने आप को हील करना। शील्ड बैटरी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग हमें देखने को मिल रही है, और शील्ड सेल्स भी जो हैं इनके पास कहीं ना कहीं कम है। नीचे की तरफ से पुश भी आ चुका है, दोनों के दोनों प्लेयर्स का रिवाइवल भी कंप्लीट हो चुका है। They're gonna push in without thinking that Caustic Traps is not going to make it easier for them।
यहाँ पे होता close revival दे रहे थे, but not the right time. That I guess with that it's a duo wipe coming in for Phantom Crew. अभी तक खास performance नहीं, but finally a good squad wipe coming in from them. Not a squad wipe, but a duo wipe as well. Bamboozled as well, fighting here. थोड़ा damage लेके हुए एक player को down यहाँ पे हो चुके हैं. Revive की कुछ सामने की तरफ से aggressive force. Damage अच्छा खास निकालेंगे. That peacekeeper, oh, it's not gonna stop. It's gonna get some crazy damage. Now position standing. Fluid, self-line level best. Knockdown shield का क्या फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे? He's trying to use it completely to his advantage. He knows that there's a very low. Oh, great shot. Squad wipe, a 1v3 with that. What a beautiful way to revive your squad and get the kill leader as well for this. Great shots. I mean, वहाँ पर आपके पास options थे multiple. You could have either chosen to revive. You could have either gone to heal yourself up, reset कर सकते थे आप अपने आप को. But he decided to go in for the push, knowing कि आपने opponent की shield पहले ही break कर दी है. He also might be looking to either reset or get the revival. 50-50 chance लिया, perfectly pounce upon किया, and the shotgun shot lands as well. A great battle to win. टीम को कॉन्फिडेंस मिलेगा, टीम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा उस फाइट को जीतने के बाद. एंड लेट्स सी अब किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करना चाहेंगे. Phantom Troop, they also got 2 early frags for themselves, so that's again another great thing for this particular team. And although अब मुझे लगता नहीं किसी भी तरीके की फाइट के अंदर एंगेज होना चाहेंगे, but they'll still like to have any bit of information that they can out to their opponents, and उसके बाद depending upon their position situation they'd like to either fall back or engage into a battle early on. ओके यहाँ पे बात करी जाए अभी भी फाइट के बाहर नहीं निकल पाए. कीपर हैज स्पॉटेड देयर इन फ्रंट ऑफ हिम. एक ब्लडहाउंड सामने की तरफ भी रहेगा तो कहीं ना कहीं सेम जो है एजेंट सेलेक्ट इवन दो सीयर नहीं हमें सामने मिस करने को मिलेगा. पोचे का चुकी है जिसका देखने के बाद काली कोशिश किया जा रहा है कि बेकअप इसको रखिए सम डैमेज के वन प्रोवाइड कर रहे हैं. ही विल पुश इन, इज गोना गेट द टोटम एज वेल. फिनिश कर दिया है तो यहाँ पे जो कीपर गए थे एबिलिटी का इस्तेमाल नॉट गोना कम बैक एंड विद दैट बिग अमाउंट लिंक टीम 3%. Reapers griefing continuously in this match as well, looking to get the second victory as well for the day. Let's see, can they manage to do that? It's about to push him. He knows Pathfinder is low, but that is going to find the last frag. Vigo Jim as well is not stopping. कह रहे हैं कि भाई हम भी हैं यहाँ पे पूरे कंटेस्टेंट में, हमें भी चाहिए फर्स्ट पोजीशन, and they're not gonna let it take it. And that's a great thing. That's a great thing as well. We go Jin. They won't give out easy, and that's a great thing that I'm loving about this particular team. Again, early battles, one for them. Early damage exchange in the betterment for them, and now they're still looking to engage into a different battle. That's a great thing. That's definitely a great thing in my opinion. Griefers, except for Mickey, तो बाकी सारे players अभी तक blue shield पे ही है, तो upgrade करना should be the priority. But let's see how do they go about that. We go Jib right now. They all have purple shields. Arcstar चिपका जरूर है रजा के, but he has been able to get the battery and get his shield back up into action. Great exchange of damage coming in as well. Vigo Jim बिल्कुल भी damage नहीं लिया है, and सामने वाले players को force किया reset करने के लिए, cells and batteries का इस्तेमाल करने के लिए. Let's see though इस time duration का क्या अच्छी तरीके से फायदा उठाया जा सकता है या नहीं. Sneeze damage लिया है, has to sell up. So does his teammate, and again back to the stall that they were at. Yeah, they knew that they had an opportunity. They could have used that, but when it was the time, they'll push then. उन्हें पता था that was not the right time. They should, but I guess कहीं ना कहीं Valkyrie का जो है tactical ability वहाँ पे use करते तो behind those boxes they could have found at least a player or two concussed there, और वहाँ पे फिर बड़े आराम से जो है push कर सकते थे उनपे. But ठीक है, I guess कहीं ना कहीं less aggressive option के साथ आगे जाने की कोशिश की. With that being said, Faded Wizard is going to try to loot something here. यहाँ पे helmet level 1 का mark कर दे रहे हैं. 30 players still starting, 10 squads still alive. Faded Wizard, I don't think so they've got many kills here. थोड़ा सा damage भी निकाला है, and I don't think so ये डब्बा जो है ये इन्होंने finish करा भी है. Hostile is going to get detected as well from Regs here. Bloodbath trying to get the pick. Unfortunately, it's not going to be enough. R301 है, अगर इस पे एक 4x 2x लगा रहता तो I guess एक अच्छा का सिचुएशन रहता. लॉन्ग रेंज अच्छे खासी तरीके से फाइट यहाँ पे ले सकते थे. 2x is also not that bad in this situation, but I guess एक 3x could have been a better thing. Again, the weapons he's running, I guess यहाँ पर घुसना चाह रहे हैं. That's what he wants. Peacekeeper है, R301 है. ये weapons close range में बहुत ज़्यादा valuable है. So his job is to get information, and if his team decides, if the IGL decides that yes, we can
really get into the battle, get into the sidelines of your enemies, then is when he gets activated. उसके पीछे I don't think so उससे पहले कुछ भी करना चाहेंगे. Will make sure that he just has information and play around it. That's about it. We go Jim. ध्यान रख रहे हैं थोड़ा सा रोटेशन के लिए and that is a good thing, but meanwhile team Bamboozle playing around the generator right now. They have been able to get some good damage. Noxy ने यहाँ पर multiple knocks निकाले अपने टीम के लिए. Even we go Jim into that battle. एक flank पे निकल चुके हैं यहाँ पर Sneeze, and let's see if he's able to get, if he's able to find some value. That's a great break of shield and the missiles to follow up as well to make sure कि वो battery ना लगे time पे. We go Jim. This is a great time to push in. This is a great time to charge in, and let's see if they do it properly or not. They're gonna try their level best. Obviously, they know this is one of their opportunity to get a squad wipe here and free के kills है इनके लिए तो एक अच्छी position पे भी hold करे सामने वाली टीम को rotate भी करना है. They could have played that position very easily, but कहीं ना कहीं अपने zone की तरफ rotate करने को भी focus करना है इन्हें और they know कि सीधा इससे तो नहीं rotation हो पाएगा. At least two squads are holding there. It's gonna be faded wizard still trying to get some knocks. Varek has been put off here. इनका revival भी जल्दी complete करना है. Portal has been placed. जल्दी से जल्दी वहां जाना है. Resurrection complete करना है. That's gonna take a bit of time. I don't think so कहीं push हमें इनकी तरफ से देखने को मिलेगा. Zone के बाहर भी है ये unfortunately. I don't think so खास damage इस time पे देखने को मिलेगा. It's just the first and the second circle. Bocek is trying to get some damage. On top of them is gonna be another squad. They're also trying to retaliate here. Damage जरूर निकाल रहे हैं. Knock भी निकाल रहे हैं. But they are not gonna let go of that height advantage here. They know that this is a massive advantage they have for them and they won't let it go. Until they won't let that go, Fated Wizard can't go anywhere from here. कहीं ना कहीं struggle कर रहे हैं. Without an ability from Wrath, I don't think so यहाँ पे निकल सकते हैं. सामने की तरफ से इसके साथ missiles आते हुए. It's gonna get a bit stuck here, but side में बाहर निकलते हुए. It's gonna be Griefers. They're not gonna let them out. That's got him. थोड़ी repeater in his hand. Might have managed to get one or two shots connected here, but खास फर्क नहीं पड़ेगा. Shield cell on the other hand सामने वाली टीम के पास नहीं है, तो ज़्यादा अगर नॉक यहाँ पे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखेगी. हाई ग्राउंड एडवांटेज का अच्छा फायदा उठा रहे हैं. दे आर जस्ट डीलिंग चिप डैमेज एंड मेकिंग श्योर कि अपने ओपोनेंट्स को परेशान रखा जाए. दैट्स अ ग्रेट थिंग. दैट्स अ ग्रेट थिंग टू डू. Victory Sports, purple sheets all around the board except for the Newcastle, and for now they're inside the zone. They're inside the zone. पीछे देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं because there's a big mountain. Flank हो नहीं सकते, so all they need to do is focus right in front of them. पोर्टल जरूर स्पॉट किया है. कुछ शॉट्स इसके थ्रू में भी ओके नो प्लेयर्स यहाँ पर आए थे एंड अच्छे शॉट्स लिए. काफी अच्छा खासा डैमेज यहाँ पर डील करने में कामयाब हुए. बट मीनवाइल वी डू हैव अ फाइट फॉर टीम प्रेडेटर्स राइट नाउ जहाँ पर दे आर ऑन टॉप. नेक्सस अभी हैज बीन एबल टू गेट अ नॉक. वी गो जिम खो चुके हैं यहाँ पर. Sneeze has been taken down by Shiva. The phase out is also there, but a crack coming in for the side of Team Predators. We go Jim. Raze भी काफी कम है. Spin the Arc Star. Almost taking down Raza. Almost taking him down, but the shield cell, but the battery is there. Shiva manages to take down Sneeze. LP Warrior gets a knock onto Raze, and that's an elimination of Team We go to Jim. भेज दिया जिम की तरफ वापस because Predators are here to play. We go Jim, they did really good at this time, but unfortunately possession and the push there was just not correctly timed there. सामने वाले players के पास एक better position थी, उनके पास एक better cover था and they used that to their advantage completely. and उसी के चलते हमने देखा कि We go Jim थोड़ा सा कहीं ना कहीं over aggress करते हुए देखने को मिले और इसी वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल में पड़ते हुए देखने को मिले. अगर थोड़ा और रुक के 2-3 एबिलिटीज का यूज और करते, थोड़ा सा और यूटिलिटी वहाँ पे यूज करते तो could have got that wipe easily. But Brett as well giving a really good fight here. Griefers as well are not gonna stop. Their aggressive plays are still gonna come in. Bloodbath on the side of the map here trying to get some knocks. Sonar is gonna detect 3 players. Crex is down. A 2v2 scenario, 2v3 scenario I guess. Blood on the string still trying to keep his team alive. That might have been trickier here, but the boxes they blocked away a lot and they might be confused with the time. The Begum is still trying. He has an RPU and managed to give a lot of damage here. He's gonna stick that grenade as well. He stuck it. The man is gonna go down. Begum is now okay down to 50 HP. That too just for health. So shield up, I don't think so it's gonna be enough. जल्दी करना है यहाँ पे. क्या सुनना से निकल पाएंगे, क्या एक स्क्वाड के लिए किला चलने खाते कर पाएंगे. बहुत चीकी स्पॉट है बट लगातार सेल्स लगा के रीसेट कर रहे हैं अपने आप को. आसान नहीं रहेगा. इट वोंट बी इजी एट ऑल बिकॉज़ विकीतो ब्लूम नाउ नीड द रिस्पॉन्स. बीकर ऊपर की तरफ चढ़े जरूर है. शॉट्स एक्सचेंज किए गए. द ब्रेक इज देयर टू कम एंड द शॉट्स लैंड इन फॉर फ्लूइड.
दे शोस दैट इन फॉर फ्लूइड एंड रेस को तो उठा ही लेंगे नॉक्सी को आई गेस यहाँ पर वापस से रिस्पॉन बीकन तक पहुंचाने का जिम्मा भी इनके ऊपर रहेगा बट द सर्कल इज सुपर क्लोज आई एम रियली नॉट श्योर क्या यहाँ पर एक और एक बीकन है रिस्पॉन करने के लिए क्या मोबाइल रिस्पॉन यहाँ पर क्राफ्ट किया जा सकता है यहाँ पर रेप्लिकेटर का इस्तेमाल करके दीज आर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस लेट्स सी व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी टीम ब्लड बात की अगर बात करी जाए तो अकेले प्लेयर अब उनकी टीम के लिए सर्वाइव कर रहे हैं एंड आई रियली डोंट सी अ वे for him to bring either verticos or cracks back into action. Yeah, you can see only 4 squads are still alive here. जहाँ तक बात करी जाए 10 players still standing. Knuckle Cluster is going to come out. He's going to use his passive ability to the level best. Grenades का पूरा इस्तेमाल करा जाएगा और खास damage मेरे को नहीं लगता इससे निकाल पाएंगे ये. Zone, okay, zone is completely in their favor. Hardstuck has the advantage in this specific map. If they use it properly, they could very easily get the champion title in this match. Bamboozle is not gonna stop. TGT Fluid as well is popping off in this match. Is getting some brilliant frags. SM Rays is gonna take down SW and Nick YT. And with that, Bamboozle gets one more finish here. 7 finish just coming alone for Valkyrie here. Noxy as well has managed to take 4 kills. Absolutely brilliant frags coming for this team. 3 squads still alive, 9 players standing. What do you think? I guess Bamboozled or Creeped might be the team that will win this match. Oh no, Breath or Bamboozled? What's your pick? What do you think? जैसे आपने शील्ड देखी भाई चेंज योर प्रेडिक्शन आई वाज अबाउट टू से प्रेडेटर्स बट यस आई स्टिल स्टिक विद देम आई स्टिक विद देम बिकॉज़ जिस तरीके से अभी तक अग्रेशन आया जिस तरीके से अभी तक की गेम सेंस गेम फाइट्स आई है Team Predators has been on top and that's why I'll also go with Team Predators right now 3 squads remaining Bamboozle they're pushing in they're trying to challenge some angles but do they know that there is a team nearby or not that's the main thing क्या information है उनके पास left hand side से rotate किया जा रहा है they are trying to go towards the slower side of the circle and even if possible I mean अभी तक तो अभी बहुत time है they have 55 seconds to work with the blue check could be interesting if they're able to land those headshots meanwhile Predators shots लेके अपनी position जरूर दे दिया but Raze almost being taken down but Raze यहाँ पर Paradise को नॉक किया सूरज Paradise that's an entirely different team but here come Predators this is the team that you really need to watch out for and let's see is team Bamboozled ready for the defensive structure. It's gonna be really difficult for them because Predators are completely demolishing them here. Their shields are almost down to 1 HP now and they're completely almost close to outside the zone here. Utility का भी पूरा इस्तेमाल कर रहा है. LP Warrior is gonna close in. The guy didn't expect this. Gar is gonna come in as well. He still has his red shield going. He's gonna find the last frag. 2 squads alive, 6 players still standing. A 3v3 situation between the Reds and Bamboozled if I'm not wrong here. 2 gold shields and a red shield coming in for them. It's going to be Hardstuck, sorry. It's going to be Hardstuck. That's going to be the second team surviving. Have 3 double shields. Same situation. Knuckle Cluster. That's just unstoppable. They're dealing a lot of damage, but यहाँ पे gold shield का पूरा फायदा उठाया जा रहा है. 2 shields में. The shield is back. That ultimate is not going to be of much use, but Shiva's going to go down. It's still a 2v3 situation. He's going to find a 70 damage here. Abhi EXE still trying. He can't manage it. This time the Knuckle Cluster is going to do its job, but is it going to completely knock him out? Very low. Abhi is down. LP Warrior still has a steal. The banner is going to go down. Abhi is also getting picked off. Last person standing. A 1v2 situation as a wingman, but no, it's going to be Hardstuck. They did try, but Hardstuck is gonna come in with their man advantage. The champions title, 4th match of the day, ROG Showdown Series. Absolutely astonishing performance from Hardstuck. Out of syllabus आ गए. I told you people, हाँ, कि zone से खेलना है जीतना ही था, and they won it. They played it brilliantly. Exactly. I mean, for me, they just came out of syllabus. Hardstuck D4, I thought so, would be eliminated easily by Predators. But they gave a run for their money. Predators did not have an easy time at all. You see, the Seer was trying. He was really trying to play around the container that he had. But एक बार आपके एक player pick off हो जाए and you force the second player to reset. That's the time when you really need to be very careful. And that's when they pounced upon the player, isolate किया, pick off किया, एक एक करके players को take down किया. Greatly played by Hardstuck D4. And I'm not sure about the number of frags that they had. But क्योंकि champions बने तो 12 points तो वहाँ से इकट्ठा कर लिए. Now, ये ओवरऑल पे कितना इफेक्ट डालेगा ये तो गेम नंबर 5 के बाद ही पता चलने वाला है बट गेम नंबर 4 did have an interesting ending where team Predators were caught and completely taken aback.
कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ऑफ गार्ड जो है पिक ऑफ करते हुए हार्टस्टक देखने को मिले थे. They didn't Mm-hmm. expect the Heartstocks team to close in True. that early when they had just gotten out of that fight. And कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट था. They were hiding, they were waiting, they didn't do anything. थोड़ा सा फाइट ले रहे थे फिर पीछे चले जा रहे थे. They were very calmly holding, they were waiting for that 3v3 situation, and when they got the opportunity they used it completely to their advantage and won the match as well. Yeah, but this was game number 4, guys. Final game of the day is yet to come. But before we start, we'll head on to a very short break. Break के उस पार, we'll start with standings and then move on to game number 5.
All right, guys, after a short break, me and Pai are back with game number 5. Pai, almost हमारा डे खत्म हो चुका है यहाँ पर. We have seen a lot of new teams coming out on top and teams like Dream Esports and team Tarun Gill. वो struggle कर रहे हैं अभी भी. Will we see the same in game number 5? I think there is some technical issue, Pai. Let's just quickly switch on your mic. Let's go. Yeah, so I was talking. I was saying that I don't know about what's gonna happen in the match right now, but one thing for Okay. sure know, I for sure know that this is gonna be the last opportunity for them today. So they're gonna have to give their level best, be it Okay. aggressive play, be it a safe performance, or be it a passive gameplay from them. But whatever they do, they have to ensure at least getting 20 to 15 points in this specific match, so that at least tomorrow when they come back they have a chance to make a comeback and get to the top of the leaderboard. Bamboozled at the moment is gonna get the first position map wise of the last match with 7 RPs, 15 kill points, and 22 points in total. Hardstuck did somehow manage to get the champions title in the last match with 12 RPs, 10 kill points. Even they performed really well in the last match. The Reds, they did try their level best, but unfortunately, Hardstuck outplayed them in the end zone. Though Preds also were really, really close to winning the last match. 16 points coming in for them as well. Griefers with 8 points, and We Go Gym with 6 points. The top 5 teams we all saw from the starting till now, at least we saw 4 teams in the top 5 performing. We saw Hardstuck perform in the last match, and even after performing in one match, they made themselves to the top of the leaderboard, at least match-wise. Oh, Bamboozle, Hardstuck D4. These are the two teams that definitely came out on top. But दोबारा से अगर आप देखें तो Predators and Griefers एक अच्छा game. Not the best possible one for Griefers, but once again Predators 16 points अपने लिए लेकर जा चुके. So they are really challenging for that first spot. And bear in mind there are just the prize pool is just for the first 2 positions. अब आपको यहाँ पर वो third, fourth तक prize pool stretch होता हुआ नहीं दिखेगा. It is just for the first 2 teams. So this is something that these teams really need to be considerate about. Predators and Griefers बिल्कुल आधे पॉइंट्स निकाल पाई Griefers मैच नंबर 4 से. आई होप सो कि जो फाइनल गेम है दिन का उसके अंदर कवर अप करने में कामयाब जरूर रहेंगे. बट बहरहाल गेम नंबर 5 इज व्हाट वी वांट राइट नाउ. गेम नंबर 5 यहाँ पर सारी की सारी हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे एंड आई एम रियली श्योर कि ये गेम हमारा बहुत ही जल्दी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा पाए. बट एक्सपेक्टेशंस जिन टीम से थी अभी तक परफॉर्म कर नहीं पाई हैं वो टीम्स. जी हाँ, कुछ टीम्स हमने जरूर सोचा था स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाएगी. सम टीम्स weren't able to do it. Let's just say that it's just not a good day for them. Tomorrow they might make a comeback. It's just not a good day for them. That's all. कल तरुण गिल की तरफ से हमें देखने को जरूर मिलेगा कुछ बेटर परफॉर्मेंस, because even though they didn't perform today, आखिरकार ये तो हमें पता ही है कि पिछले 2 टूर्नामेंट्स जीत के आए हैं. So they went through all the trouble. They won all the matches, and then they were coined the term champion. So they are really worthy, but I guess आज शायद नहीं perform कर पा रहे. That's all. Just a bad day. Hopefully they'll be performing tomorrow. Either way, this is the last match of the day. तो अभी शुरू करें तो कल तक तो जरूर ये लोग टॉप पे पहुंच सकते हैं. इसी के साथ ROG Showdown Series last match of the day देख लेते हैं एक बार कैरेक्टर सिलेक्शन की तरफ. Legends being picked up, and here we go with the final game. Here we go. Dreamy Source once again playing with 1 player shot. This is not optimal. This is not optimal at all, and I really hope कि कल के दिन पे ये दिक्कतें ना हो, कल के दिन पे issues ना आए. But for now, it is what it is, and they'll have to play with just 2 players. पिछले गेम के अंदर early elimination face करना पड़ा था against a team who themselves had just 2 legends playing. So this is something that happened to them in the previous game. Let's hope it doesn't in this particular one. Drop fights on the mini map. We just see 1, I think, on the northeastern part of the map. वो भी थोड़ा सा split है teams. On the northwestern side we have 3 different teams जो कि एक triangle form जरूर कर रही है and थोड़ा सा खतरा रह सकता है इन सारी teams के लिए. But let's see, the main thing is I do want to see the side of team Tarun Gill. क्या वो फिर से बिल्कुल drop fight के अंदर उतरे तो है, but क्या इस बार उनके फेवर में जाएगा वो drop fight? Let's have a look at it. Either way, this is gonna be the last try they get today, so they've got to make it count. जीतना तो पड़ेगा, जीतना नहीं तो एटलीस्ट किल पॉइंट्स ही निकाल ले. अगर इतना अग्रेसिव जा रहे हैं इस टाइम पे तो इतना तो सोच के गए होंगे कि इट्स डू और डाई सिचुएशन फॉर देम टुडे. होपफुली डू और डाई सिचुएशन में कुछ करें ही तो बेहतर रहेगा.
obviously get eliminated. I don't think so that's going to be of much This use one, on the what is side. that? As you told me, Relogging. Dream Esports unfortunately Means I is didn't down got- by one Acha, player. what do you Tarungil's exactly team want from another player means try which to player? try to From find Any some player, players here. any player, any player. बात करी जाए यहाँ पे player, वरुण okay, सिंह tell, शेरी की तो यहाँ पे someone थोड़ा to सा set shields the down करते हुए yesterday's Fat Monster as well is Like, going I to be just need one rotating. more. They spotted a lot of anyone players. needs match day one Arc also Star works, as right? well is gonna okay, he's gonna stop their push somehow here. Feeling सामने that तरफ this एक guy player को edited rotate them करते also. हुए Don't spot करा tell him, जाएगा. you just He's tell gonna him, spam we down need that for alternator here. Can he manage to take him down? Unknown guy only. Peacekeeper unfortunately is Haan. not gonna get the knock here. Yeah. Rap Anyone who's available. But they are in game now, guys. almost getting Kira. eliminated here. Just an Yesterday, error. anyone said DMing a boss? bet here. No, no, Okay, no. all good, all I good. didn't इसी got के साथ any बात more करी जाए because, पहला reason फिनिश because जो but है let me ask. इनकी तरफ से हमें आता हुआ देखने को मिलेगा. I will ask my still surviving. Yeah, अब anyone. कहीं ना कहीं anyone. बात I करी just जाए need one तो more यहाँ fight. पे डैमेज अपने Because खाते में कर चुके हैं. this guy. तीनों के तीनों प्लेयर जिंदा रखेंगे. देखते हैं कौन सी फाइट अगली लेते हैं. ग्रीफर्स फॉर नाउ बेगम पर्पल शील्ड है उनके पास, तो अब दोबारा से बहुत अच्छी अर्ली लूट स्नाइपर्स मार्क का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी थी. फाइनली आई डू सी एडवांटेज बीइंग प्लेड, ऑल्दो अभी तक उतनी वैल्यू नहीं निकली है. हैवान गेमिंग चेंज जरूर आया इन द वेरी लास्ट गेम. लेट्स सी इफ दे सेट देमसेल्व्स, इफ दे आर एबल टू सेट देमसेल्व्स अप फॉर सक्सेस और नॉट. सोनार से डिटेक्ट हुए पार्टी मोमोज आर इनटू द बैटल. डेविल स्लेयर ऑन द अदर हैंड अभी के ऊपर नॉक निकाला गया है. पार्टी मोमोज आर ट्राइंग टू गेट दिस फाइट इन अंडर देयर कंट्रोल. हीदन ने बहुत ज्यादा डैमेज अपने ऊपर ले लिया है. ग्रेनाइट हैज द ग्रैपल अवेलेबल, कैन यूज इट टू हिज रेस्क्यू राइट नाउ. शील्ड को क्रैक किया गया है. ग्रेनाइट स्टिल हैज अ बिट ऑफ शील्ड लेफ्ट, so this could be a fight that he wins out. Let's see though. Shots exchange हुए. Rhenium is the one who gets that knock. Granite needs to reset and so does Ethan. Try to start again, right? Okay, What it's we do? 2v2 scenario. In fact, Yeah, अब we शायद start पूरी की tomorrow. पूरी टीम वाइप आउट कर दी जा चुकी है. Party Momos a good execute there, a very good execute. They could have somehow lost that fight there अगर थोड़ा सा भी mismatch होता था timing, but नहीं, they timed it perfectly and they got that squad wipe as well for them. Havan Gaming is gonna be playing the only Vantage in this game today. We saw as of now. Let's see how that Vantage is gonna be played today. Obviously a new character यहाँ पे जरूर मजेदार होने वाला है. अगर ढंग से लॉन्ग रेंज पे यूज करा तो स्नाइपर रिवील जो रहता है यहाँ पे बहुत यूजफुल बन सकता है इनके लिए. और अगर ढंग से स्नाइपर का इस्तेमाल करा तो उससे भी सीधा नॉक निकालना पॉसिबल है ही. 14 teams surviving, 39 players still alive. जोन की जहाँ तक बात करी जाए कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा सेंटर वाला जोन लग रहा है, तो स्क्वाड्स को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी इस जोन में. as such थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके रोटेट करेंगे तो even after that they can manage to get inside the zone without getting into any problems here. Havan Gaming with a decent start here. अच्छा खासा डैमेज तो अभी तक नहीं निकाल पाए, थोड़ी सी फाइट लेने की कोशिश करी थी. अब धीरे धीरे शायद से एग्रेस करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं. And yes, it's gonna be Hard Stuck's team getting spotted by that sonar. Suraj Paradise is gonna be playing feud with this match. Okay, a good strat here, but what the hell did he get hit with? Sniper's How the hell mark. did he get down? Ooh, absolutely crazy shot with that Vantage. Absolutely destroying him. And that Seer's ability is gonna help them a bit here, but अभी भी थोड़ा सा heal करना जरूरी है. कहीं ना कहीं उस पे focus करना पड़ेगा. They have to fall back. They can't go forward with this fight at this point. Havan नहीं छोड़ेगी. Team Havan, they won't leave this particular area. The arc star lands right in front of him, but because LOS block करने के लिए एक ऑब्जेक्ट उनको मिल गया था, इस वजह से सर्वाइव करने में कामयाब है. Hardstuck, they've been able to get themselves a reset, but they really need to get out of here. They really need to get out of here because the Vantage is hitting some crazy shots. He's definitely hitting some insane shots, and let's see though क्या यहाँ पर fall back करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं. Hardstuck D4. They're being bombarded with utility. They're being bombarded with shots as well. And now they really need to get out of here. But White Death, he is in this battle. He has been able to get some shots connected. But क्योंकि पीछे से पूरी टीम थी, इस वजह से इनको pick off किया जाएगा. The trades are expected. But Samrex gets another one onto White Death. And that leaves Suraj Paradise all alone in a 1v3 to do every heavy lifting possible. That's not the case. And Havan finally get a squad elimination. What an astonishing squad of fight there. So he was trying with that wingman here, could have damaged that, could have gotten one more knock there and could have evaded. तो जैसा ट्राई करा जा सकता था, but unfortunately गन का थोड़ा टाइमिंग सही नहीं था और शील्ड भी इनके साथ नहीं थी. Positioning थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. With that being said, Party Momo is gonna be the next shot that is chasing this agent. Where exactly did he go? He's gonna fight him. Can he take him down? 1 HP standing, but no, it's gonna be LFT Genius taking down Serial Killer here. Momo as well, getting a finish for himself. Begum is gonna close in. He knew that he had that opportunity.
completely to his advantage. One more finish point coming in for him. Second elimination coming in for Creepers in this match as well. Since the start till the ending, I hope, at least I hope till the ending, they perform exactly like this. Because if they perform, it's gonna be a really difficult time for the squads in front of them. Bingham is gonna push in as well. Last person standing. Obviously, it's gonna be a 1v3 situation. Last person has no heal. He's gonna get picked off as well. A good try, but unfortunately, not gonna be a much. That रेलेंटलेस ये एक ऐसी टीम थी जो पिछले आई गेस थर्ड गेम तक अपने लिए एक भी पॉइंट नहीं इकट्ठा कर पाई थी और आई गेस गेम नंबर 4 में शायद कुछ पॉइंट्स मिले हैं इन्हें बट अब वापसी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है सो दे रियली नीड अ ग्रेट गेम एंड लेट्स सी दैट मीनवाइल relentless esports they are trying to get some shots connected opponents यहाँ पर जोन के बाहर है तो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा Calyx, Devil Slayer, Cairo all of these three players are looking to take some shots but finally decide to rotate inside the zone. Team Creeper. Okay, जी हाँ बात करिए. One more guy है. कर लिया है but still अभी भी थोड़ा struggle है. That Dark Star is not gonna connect. LOS में था but I guess इतनी पास नहीं था, range पे नहीं था. उसके Rishi Snake is gonna use his ability here for the same team in the sense different team than the यहाँ पे healings जो है नहीं रहेंगी सही टाइम पे. शील्ड एक डाउन होती हुई बात करी जाए पहले तरफ पे कॉफ हो चुका है. वन क्लिप स्ट्रगलिंग, he's lost his shield, trying Kyari managed to get the second pick as well. Kyari converted into a 1v3. Massive damage coming in, a brilliant push from both the players here, and with that it's gonna be Groovy Gorillas coming out of this fight victorious. Absolutely crazy performance from them. With that, only 9 squads will be left, 22 players standing. Stu from Just which that team? ability being used Gripper. to check for Same some third hacking parties team. or any squad that might No, have no, been no. It's sneaking another in. team. But I don't It's, think they're gonna spot in anyone. Baat in the kari jaye, starting 3 players still actually standing. With that, they'll be moving Okay. forward. Let's So, see. I The directly zone asked is them. not gonna be in their favor. थोड़ा सा rotate करना, but अब इतनी खासी supplies अच्छी खासी हो गई होंगी इनकी कि I don't think so it's gonna be a problem for them. Per se, Grief is on the other side. Same situation for them. But somehow आज इस मैच में मेरे को per se जो है कहीं ना कहीं इनकी रेड और गोल्डन शील्ड्स नहीं दिख रही है which is unusual for them. But कुछ ही देर में मिल जाएगी कुछ इतना ज़्यादा डैमेज दे देते हैं क्योंकि सारी की सारी शील्ड्स अपग्रेड ही होती हैं. बाय तो नहीं करते हैं ये और किसी और से ट्रेड भी कम ही करते हो देखने को मिलता है. इतना डैमेज से लोग निकाल लेते हैं वो भी इतने एलिगेंटली निकालते हैं कि आपको लगता है कि इतनी आसान गेम है कि कोई भी कर लेगा. But when you get to play you understand it's really difficult to do what That these team 3 players players only are playing. Last player among Let's see though now Hevan once again taking initiative trying to go in for the battle and Warlord ने यहाँ पर knock भी निकाला है. Warlord has been able to take down Rupam. So let's see if they do continue on that battle or not. Scorpion on the other hand manages to find a frag as well, manages to find a knock. Team Griefers, they're still pushing in. The Seer ability will for sure give that information. And here comes the usage from the Gravity Well as well. Push in किया जा रहा है यहाँ पर. Well, let's see Hevan क्या value निकाल पाते हैं या नहीं. the game was there. कोशिश तो Was यार about की to तरफ से update them रहेगी. even अच्छा more. खासा यूटिलिटी का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया जा चुका है. गेस इतना सारा एफर्ट डाला है तो कुछ ना कुछ नॉक फिनिश निकालना ही पड़ेगा इन्हें. फेडेड विज़र्ड एज वेल इस बार फिर से हमें 2 प्लेयर्स के साथ कहीं ना कहीं खेलने को मिल रहे हैं. एक प्लेयर एलिमिनेट नहीं आए ही नहीं थे. वेक्टर ई-स्पोर्ट्स लास्ट मैच में एक प्लेयर की कमी देखने को मिल रही थी बट इस मैच में शायद नहीं. इनफैक्ट इस मैच में भी अच्छा तीनों के तीनों प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं. यूट्यूब पुश ना कर दे अकेले. सामने प्लेयर स्पॉट हो चुके हैं. डैमेज देने की कोशिश दोनों की तरफ से बट इट्स स्टिल नॉट गोना बी इनफ. नो बुलेट्स आर गोना कनेक्ट हियर. नूब थोड़ा ज्यादा रोटेट कर चुके हैं बट आई गेस वो फाइट थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं एंड ही इज prioritizing on going to the zone. He's still trying to get some damage here. धीरे-धीरे रोटेट करते हुए Valkyrie here कुछ खास नहीं कर पा रही है बट हाँ अभी अपनी स्क्वाड को रोटेट करने के लिए बस टाइम देना है. सीर को फिनिश ऑफ करने की कोशिश and with that revival is also gonna come in. Creepers did get one person knocked down there but इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. एक प्लेयर को जितने में नॉक करते हैं उतने देर में ये सामने वाली पूरी टीम को फिनिश ऑफ कर देते हैं. So for them a normal knock is not that big of a problem. धीरे-धीरे आगे जाने की कोशिश रहेगी. Varric is still trying get inside the zone. Jump pad का use करा जाएगा. Okay, that's gonna give the boost that he needed. He's gonna get inside the zone without any problems here and hopefully he doesn't encounter any squads as well. Faded Wizards only 2 players Warwick and IQ and अपने frags निकालने में कामयाब है. Bear in mind kill leader है IQ. 3 frags to his name. He has been the person who has most kills in the lobby for now. That's a great thing to achieve. Meanwhile, once again IQ has been taking a lot of shots, has taken a lot of shots and Arkstar to follow up
पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिले हो गई। आईक्यू को सर्वाइव कर पाना यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल है। द शॉट इज नॉट लैंडिंग, वेपन पे गलत टाइम पे स्विच किया, नहीं तो वॉरलॉर्ड कुड हैव बीन एबल टू गेट दैट नॉक। अ ग्रेट टर्न ऑफ इवेंट्स has led IQ to survive for a very little bit of time, but finally on YouTube will come in. Knock निकाला जाएगा, but बीच में Warwick has been able to reset himself, but here comes the push from the third party. The third team is here. Warwick hiding in a corner. Not for long. He will be taken down, and Vector Esports is the team were able to get the flash, but here comes the third party. Heaven dropping utility, and then Fire will drop themselves out as well to enter into this battle. Okay, it's a very, very intense situation. A third party after a third party. It's gonna be another push coming in from Hevan. He's gonna loot 2 players here. Hevan last person standing as WN. Okay, kill leader यहाँ पे जो है change होते हुए. Griefers haven't even lost Griefers, one player. another team. Yet. Oof, how the hell? One more third party coming in. It is absolutely crazy. 3-4 spots left. Griefers is going to try and chase the squad in front of them. यहाँ पे गलती से पोर्टल में घुस गए, वापस से नीचे आते हुए. Okay, found one more player for them. With that, one more player getting eliminated. 11 players standing, 11 players still surviving, but they have still yet to find 2 more players here. He was able to stall the players for some more time, but अभी भी जो है खास फायदा हुआ नहीं है इनको. एक प्लेयर को तो गवा ही चुके हैं. अभी मेरे हिसाब से इस टाइम के बाद जो है बीकन लेने के बैनर लेने के बाद भी रिस्पॉन करना becomes really really difficult, because even if they do complete that respawn, supplies नहीं आने वाले हैं, और जहाँ पे supplies होंगे वहाँ पे players भी रहेंगे. So that's almost a very difficult scenario. First squad surviving. Groovy Gorilla still trying to find someone close to them. यहाँ पे सामने इधर बात करी जाए तो सारे के सारे players जो हैं यहाँ पे capitalize कर चुके हैं इस position पे. Gorillas have a good location under their control here. They just try to hold, wait for some players, and just as they spot someone rotating, they could get some free damage or picks from that. Groovy Gorillas right now again hunting for information. Just 4 squads left. In terms of frags उतने हैं नहीं, but finally एक ऐसी टीम जिन्होंने पहले 2 games अच्छे खेले थे, finally finding themselves a good position, finding themselves to the top 4 position. And now let's see, Hevan Gaming सिर्फ एक ही player बचे हुए हैं यहाँ पर, SMHV, and he's playing for position points. Top 4 is where we are at right now. He would be looking to get at least in top 3 maybe. Hope कर रहे होंगे कि एक और टीम आपस में fight out कर ले, and then he survives and tries to get as many position points as possible, but that's about it. Cannot go further than that. Cannot think of winning the game right now, because maximum teams are surviving with what 3 players, right? बाकी तीनों टीम 3 players के साथ survive कर रहे हैं. But let's see though, Hevan, what do they have in store for us? Yeah, it's going to be difficult for Hevan to do anything, but the best he could do is get the second position. Keep himself alive for as long as possible. Let squads fight between them, that's what he said. So, basically, वही करना है. But it's going to be difficult. इतने सारे Bloodhounds और Seers अब सामने हैं, तो कहीं ना कहीं reveal होने का डर हमेशा बना रहता है. But इस time पे दूर निकल चुके हैं बाकी टीम से, तो I guess that's a plus point for him. धीरे-धीरे push आता हुआ Gorillas की तरफ से they've spotted some players here. थोड़ा सा damage देने के लिए भी कोशिश यहाँ पे जारी है, but अभी तक they haven't managed yet. धीरे-धीरे spot कर रहे हैं. They're trying to chase them down as well. Zone की तरफ भी जाना, एक hard shift आता हुआ. It's gonna come in towards lava region. Not the ideal spot here, but okay, not that bad a spot as well. इसमें इतना lava का interference नहीं रहेगा, और अच्छे खासे compounds भी रहेंगे यहाँ पे जो कि cover provide करने में successful रहेंगे. Spaceman Insane, Space Insane is still trying to use his Valkyrie to the level best. He's flying from here and there, rotated to the best possible position at this point. Has got the location here. Seer is gonna use his ability as well. It's gonna be one more third party coming in. Not a third party, but a 3v3 situation coming in. नीचे की तरफ से damage निकालने की कोशिश में की, तो Bloom still holding the same position. I don't think so they're gonna overcome it. They're gonna hold. They're gonna wait for the squad with squad in front of them to close it. अभी बस wait करके बुला रहे हैं. They're just trying to call them. That's all they're trying to do. Okay. Squad is gonna damage him. A lot of damage coming in. 3 players hold up in the corner. That's not ideal. That was Thermite grenade also sticking. ये बहुत ज़्यादा pressure create किया जा रहा है यहाँ पर Griefers के ऊपर, and Griefers Space Insane goes down. राजा बहुत अच्छे shots लिए गए उनकी तरफ से. He's been able to get 1 knock. We go Jim. This is their chance. This is their chance where they can pounce upon the side of Team Griefers and eliminate them. Let's see if they're up for the job or not. Shots लगातार लिए जा रहे हैं. Sneeze की बात कर जाए तो पीछे से cover देने की कोशिश है, but Scorpion third party होते हुए Phoenix from Team MNK comes in, gets that third party, gets that knock as well.
Groovy Gorillas are trying to come in with the third party and get some frags to their name. 8 निकाला जरूर है, but Vigo Jim एक player को revive करने में कामयाब रहेंगे. One clip, he's trying to get the best possible position using the Valkyrie and he has been able to do so. Phoenix goes down to Raza's R301. Scorpion, he has been able to find an enemy. The shots are being exchanged. Raza needs to be careful. Shield is completely out of question right now. Needs to find a safe space. That's not going to be the case. Got to know, right? Mark? Groovy Gorillas are able to eliminate the whole squad. It's down to a 3v2 situations. Creeper is down to okay, they're down one player here. I don't think so that recovery is gonna come in at this point. It's down to a 2v3 situation. Can the Creepers make this happen? He's gonna push it with Havoc in his hand. He does have that hop-up. It is gonna help him a lot. The shield chain is also gonna come in. A lot of damage. 2 players knocked down. Last person standing. A 1v1 situation. Very intense. He's gonna pop up that battery as well. Can he close the situation and get one more champion title for the team? Or is it gonna be Groovy Gorillas finally getting that first position they've been wanting for a long time? One clip is gonna aggress. He spotted one person. Shields down. All person has been revived. Begum is gonna finish off one more player. 2v1 situation. Now it's a complete different scenario. Just a moment ago it was Creepers that was one player down, but now it's a different thing. 1v2. Can Begum and Space Insane manage to get this 1v2 and get their squad yet another champion, right? Let's have a look, have a look. The shots are being exchanged. The distance gets closer and that's about it. Griefers, they close in the distance, they get the frags and they are the champions of game number 5. Again, Griefers be coming out on top. जिस तरीके से खेल रहे हैं अभी तक ये पिछले स्पेशली 3-4 गेम जो खेले गए ग्रीफर्स की तरफ से, they have been amazing, they have been insane and this time again sticking the revival. Not sure how was he allowed. उनके opponent player knock थे सामने. As soon as you hit the battery, you know that you have to go and push in, नहीं तो revival हो जाएगा. But that gets allowed. वो चीज allow करी गई उनके opponents की तरफ से and Gorillas who could have really got themselves that championship title miss out on that just because of that particular play. थोड़ा सा टाइम वेस्ट वहां पे करा था. दोनों टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी थी कि तभी जो है फाइट खत्म करे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा वो फाइट खींच दी और इसी वजह से जो है गोरिल्लास हार गई. दे हैड अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कंप्लीटली ओपन टू देम. दे कुड हैव वन द मैच. कहीं यहाँ पे डिफरेंस भी नहीं था इतना खास स्किल में कि ऐसा है कि सामने वाली टीम बहुत डोमिनेट कर रही है. They could have very easily won that, but due to some small mistakes or some unfortunate or unavoidable situation, they were unable to do it. But second position, that too with that deadly performance from them, is also not that bad. That's also pretty crazy from them. But obviously, we all know the team that won it. Oh, absolutely crazy performance. The Griefers, I guess this is the third match they're popping off. Third or fourth match they're popping off. So it's that's not the consistent play you were talking about. That's what you wanted to see in all of the teams, but unfortunately only some of them were able to show it to us. But either way, Griefers, absolutely beautiful performance in all the matches. That's true. I mean, Griefers ने जिस तरीके से अभी तक का गेम दिखाया है, we all heard that, right? The people were calling them hackers. I mean, not completely sure. We'll definitely look into it, but I really did not see something coming in which really was looking fishy. Not to my eyes. Maybe people know better than me. Maybe we'll have the management look into it. But yeah, that was a great run for Team Griefers. The last few games were insane. They were being tipped off from the side of Team Predators, but I think Predators got eliminated very early in this game. And जहाँ पर Griefers champions बन के आए हैं. So lead तो जरूर बनाई है Team Griefers ने on to their opponents Predators. But let's see कितनी बड़ी lead है, because after this game we'll also see the overall standings. Game number 5 के बाद overall standings हम एक बार फिर से देखेंगे. And let's have a look कि day number 1 पे किस तरीके से कौन सी टीम ने खत्म किया है. Crazy Gorillas, they had a chance. They really had a chance right now. हो सकता था कि वो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स प्लस 2 अगर फ्रैग्स के और मिल जाते, इन टोटल 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इनके पास आ सकते थे. Could have been the situation. Wasn't the case though. But it's still good to find finally the momentum that you were looking for throughout the day. आखिरी गेम में ही मिला, पर मिला तो सही. I hope so day number 2 पे ये momentum जो है carry forward किया जाए and continue करे. And you never know, top 2 के अंदर क्या पता एक और नई एंट्री आ जाए हमारे लिए.
Yeah, it's better late than never. इसी के हिसाब से जो है True. लास्ट मैच लेकर चले थे गोरिल्लास। इवन तो हमें बीच बीच के कुछ परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिला कि मतलब ट्राई कर रहे थे, they did manage to get some kills Uh-huh. as well. They were a bit powerful at times, though end में हमें इतना नहीं देखने को मिल रहे थे, but they were trying. कभी ना कभी जोन प्रॉब्लम दे Okay. रहा था, they were getting third partied or some of those problems, but नहीं, कोशिश उनकी तरफ से पूरी थी। एंड में भी फर्स्ट पोजीशन जैसे हमने कहा बिल्कुल पॉसिबल था। We would have wanted them to win that match as well, because Griefers have already so many points in their pockets. Why Mhm. would they need three more points just to, be on top and more on top? Uh-huh. So that's the basic reason. Groovy Gorillas could have gotten that, but either way, a good try. They have one more day left, a beautiful new day tomorrow as well coming in for all the teams. They have one more opportunity. Best of 5 matches tomorrow as well. We're gonna see which teams do make a comeback, और कुछ teams जो आज perform कर रही थी, क्या वो हमें कल perform करते हुए क्या नहीं देखने को मिलेगी? Yes. That could also be completely possible. But whatever it is gonna be, both of us are obviously going to be very eager to know what is going to happen, and obviously the audience will be tuning in as well for the matches tomorrow. Day 1 of grand final, ROG Showdown series powered by Intel. आखिरी मैच इसी के साथ खत्म करने का वक्त तो आ चुका है। कुछ ही देर में हम आप लोगों के लिए स्कोर बोर्ड भी लेकर आएंगे, बट एब्सोल्युटली बहुत मजा आया आज कास्टिंग करने में फ्रिट्ज भाई आपके साथ। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। Oh, for sure, for sure. काफी ज़्यादा मुझे भी मजा आया भाई. It was a great game. It was a great game. And now let's have a look. Let's have a look at the scorecards as well. पहले चलते गेम इस पर्टिकुलर गेम के स्कोर कार्ड की तरफ. ग्रीफर्स दे वन साथ ही फ्रैग्स निकाले सिर्फ. इन टर्म्स ऑफ फ्रैग्स इस बार थोड़े से कम रह गए, जिसके चलते पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी टीम्स के बीच में. लुक एट दिस. ग्रीफर्स ऑल्दो बीइंग ऑन टॉप 19, फॉलोड बाय टीम ग्रूवी गोरिल्लास, द ओनली 3 point difference that is there because of the ranking system. हैवान गेमिंग आती है तीसरे पायदान पे, 12 अंक इनके पास है. वीगो जिम फाइनली बैक विद द कंसिस्टेंसी, 12 points to their name. पार्टी मोमोज 8 points इन्होंने भी निकाले हैं. फेडेड विजर्ड्स ये 5-6 लगातार ऐसे ही कुछ इनके लिए पॉइंट्स आए हैं. एंड वंस अगेन दे गॉट 6 points to their name. वेक्टर ई स्पोर्ट्स 6 to their name. ड्रीम ई स्पोर्ट्स 5, तरुण गिल 3, हार्टस्टक D4 3, Relentless 3, Unga Bunga 3, Bamboozle, Bloodbath, Ringmasters 1 each, and Predators तो खाता भी नहीं खुला. ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगा अब ग्रीफर्स और प्रेडिटर्स के बीच में. बट स्टिल प्रेडिटर्स ने पिछले कुछ मैचेस में ऐसा परफॉर्मेंस हमें दिखाया है जिसकी वजह से आई एम स्टिल श्योर दैट दे विल somehow make it to the top 3 in the overall scoreboard. और इसी के साथ एक बार जल्दी the final moment that we were waiting for today. After all the 5 matches, we have the teams which were the best for the day, and it's gonna be the first position coming in for Griefers. 36 ranking points here, 44 kill points divided across 5 matches. So that's a good kill death ratio here for them. Total points is going to be 80. 80 points is the top at the moment. Preds with 63 points. A big difference there. 17 points difference between them. Vigo Sim, 54 points. 9 points difference here. Bamboozled with 5 points difference. Dreamy Sports as well. 4 points difference. बाकी बात करी थे फर्स्ट और सेकंड में एक बहुत बड़ा गैप हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है. बाकी सारी टीम्स धीरे धीरे वो गैप क्लोज इन होता जा रहा है. बट स्टिल द टीम्स under top 10, they really have to step up their performance tomorrow, because if they don't, it's gonna be really brutal for them, because tomorrow is gonna be the final day, the grand final of the ROG Showdown. See, I think top 3 में जो अभी टीम्स हैं यहाँ पर पाए, they are the ones who really have a chance. Bamboozled is at 39. Top 2 में आने के लिए you require what, like 2 very good games, and you really need either Griefers or Predators to be out in both of these games. चलिए एक बार तो हो गया कि प्रेडेटर्स 0 पे एलिमिनेट हो गए, बट आई डोंट थिंक सो दोबारा होगा. आई एम रियली श्योर अबाउट दैट. until unless we do see something completely out of this world happening, that is not going to be the case. So really it's a fight between Griefers, Team Preds and Vigo Jim. Yes, maybe Bamboozled, yes, maybe Dreamy Sports can come in, but उनको फिर लगातार 3 या 4 विक्ट्रीज चाहिए होगा out of 5, which is in terms of probability not very probable. That is not very probable considering कि सारी की सारी टीम्स खेलने वाली है. बाकी टीम्स की अगर आप बात करो तो DT7 is 120% out of the competition. Just 2 points from the 5 games. It would be a lot to expect like 80 pointer day from them tomorrow. So that's not going to happen at all. So कुछ teams हम already rule out कर सकते हैं. Anything below I'd say 30 points is completely out of the tournament. No way they come back into the game. No way they come back into the tournament.
बहुत एक मुश्किल चांस है 30+ वालों के पास भी। आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट स्टक D4, आई एम टॉकिंग अबाउट हैवान, ड्रीमी स्पोर्ट्स, बैम्बूजल्ड, इनके लिए बहुत मुश्किल चांस रहेगा। बट आई रियली थिंक इट्स ओवर। टॉप 3 आर द वंस हु आर लुकिंग टू जस्ट कंटिन्यू द रन राइट नाउ। एंड कल के जो 5 गेम्स हैं, अपनी या तो पोजीशन आप सीमेंट करेंगे या तो आप नीचे स्लिप होंगे। द ओनली 2 आउटकम्स राइट नाउ इज व्हाट आई सी। There is still the possibility that the teams that have the good positions at the moment, they might overcome it or be more confident than today, and that Okay. sometimes becomes a problem. So that should not be the reason for them losing tomorrow. Either way, all the teams performed brilliantly. All the 5 matches were crazy. The teams that did not perform, a nice try to all of them. Tomorrow you have one more day. It's gonna be really difficult for you guys, but still, at least you can still give it a try. You still will gain a lot of experience. But with that, today, the first day of our grand final will be coming to an end. ROG Showdown series powered by Intel. We will be taking a break for the day, and we'll be back tomorrow with a brand new day and 5 new more matches. Break down.
Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. Maybe it's not enough, baby. I don't wanna lose you after all that we've been through. If you could change my mind, I would do it in a heartbeat. That's if you really love me. Yesterday's anyone Setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream, so why are you always sleeping? Try to start again. I remember when you said you're afraid of what's ahead. What happened to ride or die? I asked and you just start crying. How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause I'm not enough.